All these games live on YouTube through Photosonic Productions here in Bicholim. Nicely played down the ground. That's all we could see. And with that, victory for FC Cricketers. They win this game quite comfortably by 10 wickets. And they to take on Bhumika 11 Karnka. Brishar Sawant with the fluorescent cherry to start off the proceedings. With the bat, no surprises. Sahil Wangankar along with him. It is Naren Sare. Here's the first delivery in this innings of Autotech Panjim. Reverse sweep missed completely. Dot delivery to start with. Well, you can say this is the game you need to look at. To the best sides from the North Goa. Talking about Autotech Panjim, Sahil Wangankar, his team, and as well as Rajat Kudalkar at the other end. Looking for the reverse again and again, missed. Big boundaries. You need to be circumspect when you are trying to run the singles, doubles. That's where you will be tested. Boundaries are hard to come by. That's up in the air. Just gone over. And that will have enough power
to go down the ground for a boundary. First boundary in the innings, and gets off the mark with a boundary does Sahil. Hammered away for a boundary. This time over covers. 2 boundaries in succession. Score moves on to 8. So dealing in boundaries is Sahil. Once he gets in his grooves, he is a very difficult batsman to bowl to. No matter, Mahabeshwar Sawant can leak runs, but will get the big wicket. Again, this time hammered and popped. And popped straight to Vedang. As I was talking about earlier, will get the danger man, and he does on the very next delivery. Again, looking to go over the top. This time flat batted and straight to the fielder at mid-off. New man in Diptesh. In case if you have joined just now, then this is first Holgaon Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament organized by Friend Circle here in Bicholim under the able leadership of the ex-MLA of Bicholim constituency, Shri Naresh Savar. Nicely played straight to Anukul. Dot delivery to end the over. A successful over coming to an end. 8 for 1 after 1. Auto deck Panjim. Indian bowling. It will be Anukul. Will be bowling to Naren Sare. Good delivery, just cut away. Played it with soft hands and will just be a single. Nine for the loss of 1. Second over in progress. Deciding to bowl first. The Bhumika 11 Karnka after winning the toss. And currently in a very strong position as they have got the danger man very early in that first over. This time down the ground. Power in that shot. And down the ground it will go for a boundary. Score moves on to 13. Oh, that one just kept a bit low. Dot delivery, just trying to come a bit ahead onto that ball. The ball dipping on the last occasion. Nevertheless, a dot delivery. This time again down the ground. Fielder. Excellent work.
would have placed himself in a better position, would have been taking that catch, but not to be. Excellent effort though. Will be a couple of runs. Score moves on to 15 with those couple. And straight away, changing the field, Pritesh has been swapped in. All the entire scoring that has been handled by Arnav Singh. This time, switch. And switch will just be cut off by Mahadev. And coming back for the third one. This could be dangerous. No, not quite. A better throw would have had the batsman in danger at the keeper's end. Rajat just telling his fielder that if you would have been throwing it perfectly, would have been gone on Naren Sare. Fortune favouring the brave. He's still out there. 3 more runs added. Score moves on to 18. Talking about 18th year of IPL and the 18 jersey winning the trophy this time. And a lot of CSK fans having getting some bit of a spicy bit of zing in their backs. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 18. 18 for the loss of 1 after 2 overs. How to attack Panjim. The premier all-rounders in Goa. Rajat Kudalkar into the bowling attack. Starts off the slow delivery up in the air. Fielder coming in. And that will be taken. Covered a lot of ground. Came in from the boundary rope. And Pritesh taking an excellent catch. And straight away, Rajat has got. And the drizzle has just come in a bit. Hope it's just a passing shower. Doesn't turn out to be a bigger one. We need some play today to complete the entire fixtures of 10 games that will be played today. From morning till evening. Pritesh, the new man, in on strike. Starts off with a slow delivery again. Again a dot delivery. Just that you offer some pace, it will become difficult. In fact, will be very much easier for the batsman to hit it across. And this being big boundaries, you need to apply some bit of pressure. That's wide, extras. Talking about the slower deliveries, you need to have different kind of deliveries in your armory. Just can't afford to be bowling one length and one area, and also with the same pace. You need to change a bit as this game is ever slow evolving day by day. This time flat batted down to Anukul, and that will just be a single. Gets off the mark with the single, does Pritesh. Score moves on to 20. This being the third over in progress. 2 more overs to go after this.
And definitely the Autotech Panjim will be eyeing across 45-50 on the scorecard, as they've got that batting depth. This time down the leg side, and will be another wide. More extras. Just trying too many things right now is Rajat Kudalkar trying to follow the batsman, but the batsman is just shuffling across to hit it over the boundary rope, maybe behind square, as nobody's there in that region. Again, this time winding up straight to the fielder, deep square leg, will just be one. Excellent throw by the fielder Mahadev. Score moves on to 22. Still 2 deliveries remaining in this over of Rajat Kudalkar. Pritesh back on strike. Again a slow delivery, this time whipped down the ground, down to long on. Will just be one. 23. Third over in progress, 1 delivery left, 2 moves remaining. Need some boundaries or need to rotate the strike at regular intervals, these two. Short delivery and nobody there. The fielder will just have to fetch the ball from the boundary. So 27 after completion of 3 overs. 27 for 2 after 3 overs. Autotech Panjim. Dhanesh out in the bowling attack and played in the vacant onside region. Rajat Kudalkar after it. Excellent recovery. Rajat Kudalkar is very quick. Just one on that occasion. And that's the hallmark of a good player. When you have such a excellent player who has been traveling across to play different tournaments and also brings the extra bit of experience and some kindness in that team, where he can spread it across his teammates and also the other fielders, also obliging very well. Single taken, score moves on to 28 with that single. Left-handed Naren Sare back on strike. Can he go big? Dot delivery. Again trying to shuffle across and hit it over the onside. Missed it completely. Fabulous bit of atmosphere here in Bicholim. On the bounce and straight to the field at back to the square. Excellent throw as well from Mahadev. Just a single. 29. Exactly 9 deliveries remaining in this innings. 29 on the scorecard. 29 for the loss of 2. Autotech Panjim inserted to bat first by Bhumika 11 Karnka. Again trying to go the top. This time no proper timing. Just a single. Score moves on to 30. Many strong teams that will be playing today. These two being two of them. Also earlier in that previous game, Shirgaon took on Vasco. That will be wide. Extras. That's big. Is it out of here?
It certainly is. Huge hit for a maximum. Half a dozen runs. Score moves on to 37. Again, two in a row. This time it's gone even further. Score moves to 41, 43 in fact, with that maximum. Goes in towards that 50 mark. 43 for the loss of 2 wickets after 4 overs. Autodeck Panjim. Change in bowling for the last over. We've got Mahadev. Starts off with a full toss and that gets hammered away. It's a no ball as well and it's half a dozen yet again. So with that, 50 up for Autodeck Pen. Free hit time. Let's see if this free hit can be utilized properly. Pritesh, the man on strike. This time, miscued. Down to the fielder at covers will just be 1. Score moves on to 51. Brings the dangerous Narain back on strike. 2 maximums in that previous over. 2 powerful hits over the mid-wicket region. This time, let's see what he can deliver. 5 deliveries remaining. And definitely the Autotech Panjim will be eyeing 65-70 now. Full toss, and that will be wide. Extras. Full toss, up in the air. Bowler settling and taken. That one was swirling in the air. Excellent take by Mahadev. Gets the dangerous Naren Sare. It's 52 for 3. New man in Krishna. 4 deliveries remaining in this innings. 52 for the loss of 3. Nicely played. And that has been drilled. Nobody moved. Excellent timing on that one. That went like a tracer bullet to the boundary rope. Score moves on to 56. What a shot that is. Maybe having some nets earlier. And straight away from the nets he has come out. And that has been hit. In fact, drilled through the covers for 4. Mahadev again. This time gone. Outside edge and keeper does the rest. Wicket taken. 4th wicket down. 56 for 4. Autotech Panjim.
New man in Gotham. Swing missed. Looking for the single, Pritesh. And that has been missed. And that will be gone. Importantly, Pritesh gets back on strike. And a wicket. Will have to sacrifice his wicket, does Gautam. 56 for 5. Half side done packing of the Autotech Panjim. Last delivery coming up. And yes, Mahadev again. विकेट 57 का। ओपनिंग जोड़ी रजत गुडालकर और उन्हीं के साथ प्रीतेश ओपनिंग जोड़ी और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर साहिल वाइंगनकर गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छा टोटल है। अगर 5 ओवर की बात की जाए तो सीमेंट विकेट है। फ्रेंड सर्कल आयोजित ये रेनी क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम आज दूसरा दिन, कल के पहले दिन में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम, और आज देखना होगा दूसरी टीम कौन होगी। लेकिन उससे पहले ये आज के दिन का दूसरा मैच मैदान पर और साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर। 57 टोटल टारगेट। अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ दया पेडनेकर और उन्हीं के साथ सुदन ये जोड़ी, और स्ट्राइक पर बैटर है रजत गुडालकर।
पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, थोड़ी सी नीची भी रही गेंद और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। दो फील्डर है बाहर, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। साहिल वाइंगणकर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद को फील्ड करते फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चले कैप्टन साई बाबा क्रिकेटर्स अड़दोना और मांद्रेम बॉयज दोनों टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क कीजिए। अगला मैच तुरंत होगा दोनों के बीच का और साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार आगे निकलकर खेला, गेंद को देखना होगा, फील्डर है मौजूद मिड ऑन पर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ भूमिका 11 क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। पावर प्ले का ओवर और सामने बैटर है प्रीतेश। ओ पुलर लेन की गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद सीधी जाके पैरों पे टकराई, स्लिप पर कृष्णा गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंद साहिल की बल्लेबाज को बिल्कुल शांत रखती हुई, जो कि बीट करती हुई और एक बार फिर से अपने एक 10-12 कदमों के साथ रनअप पर अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा शॉट कवर पर फील्डर। अगला मैच होगा साई बाबा क्रिकेटर्स अड़दोना और बाल गणेश मांद्रेम, इन दो टीमों के बीच में होगा। एक अच्छा शॉट था कवर पर, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग शॉट एक्स्ट्रा कवर पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। शाम अगर मैं कल से अब तक की बात करूंगा तो पावर प्ले में सबसे किफायती ओवर ये साहिल वाइंगणकर का, सिर्फ एक रन इस ओवर में। तो कल से अगर अब तक की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन ओवर पावर प्ले में वो अल्ट्राटेक पणजी क्रिकेट टीम की ओर से साहिल वाइंगणकर का। कल शानदार बल्लेबाजी, सनी सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम जिन्होंने 36 रन बनाए, सूरज गावड़े ने बनाए 36 रन, साई जोरे के भी एक शानदार इनिंग इस मैदान पर देखने को मिली। और आज दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहला मैच थोड़ा सा एक तरफी रहा मैदान पर, लेकिन ये मैच कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि दो बैलेंस टीम है, दो बहुत अच्छे टीम है, दोनों टीमों में अच्छे ऑलराउंडर है और सामने रजत कुडालकर जो बिल्कुल अच्छे फॉर्म में भी है। और देखना होगा पहला ओवर बिल्कुल शानदार गेंदबाजी रही साहिल वाइंगणकर की, एक रन और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। परिवर्तन हुआ और प्रीतेश खुद का पहला ओवर लेकर, ओ फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा पर, सिक्सर, 6 रन के लिए। हमारे जो कि टीम के ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर है, आपका भी थैंक यू, क्योंकि गेंद इतनी दूर जा चुकी थी और बहुत जल्द जो कि मैदान पर आती हुई बहुत एक करारा शॉट। स्लोवर वन, इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, थोड़ी सी फिर से हवा में, कवर पॉइंट बाउंड्री पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 पर। एक बड़ा शॉट इस ओवर में जो बहुत जरूरी था भूमिका 11 क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि पहला ओवर में सिर्फ 1 रन बना था और अब मात्र टोटल आगे बढ़ चुका है। फुल टॉस, इस बार गेंद हवा में स्क्वायर लेग पर, ओहो फील्डर को बीट किया इस बार गेंद ने और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डी से
क्रिकेटर्स कैप्टन आइए टॉस के लिए। गति में परिवर्तन, गेंद थोड़ी से हवा में कवर पॉइंट पर, शायद ये मौका जरूर निकला था, ये ऐसे कैच, लेकिन साहिल की कोशिश भी बहुत अच्छी थी। अगर पकड़ते तो टूर्नामेंट का एक बेस्ट कैच भी बन सकता था, लेकिन थोड़ी सी गेंद हाथों से दूर हो गई। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बल्लेबाज प्रीतेश, गेंदबाज प्रीतेश, टोटल स्कोर 14 रन। ऑन साइड पर बहुत ही लाजवाब स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे ओह, बहुत ही लाजवाब इनसाइड आउट, डीप एक्सगर और लॉन्ग ऑफ के बीच में एक लाजवाब शॉट, 4 रन के लिए गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन से बाहर। दोस्तों प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका सभी का। तो आने वाला मैच होगा बाल गणेश मांद्रेम और साई बाबा क्रिकेटर्स अर्दोना, इन दो टीमों के बीच में। पहले पिछले ओवर बहुत महंगा साबित हुआ और टोटल स्कोर हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22। तो पिछले ओवर में 21 रन बने, कहीं ना कहीं महंगा ओवर साबित रहा। गेंदबाजी में परिवर्तन, फिर की गेंदबाज अर्जुन नेपाली आ चुके बॉलिंग बार पर। 22 टोटल स्कोर। अल्टी पल्टी वाला शॉट, अच्छा टाइमिंग, फील्डर है मौजूद थर्ड मैन बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को उठाते दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और डायरेक्ट हिट, आउट। क्या कमाल का थ्रो, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट रनआउट के रूप में एक सिंगल जरूर मिला, लेकिन पहला विकेट इसी के साथ वापस। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। चलो दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए। चलो दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए। डीजे ट्वेंटी लॉस ऑफ 1 विकेट। न्यू बैटर मैदान पर धनेश आउट है। एक अच्छी शुरुआत की है रजत कोडालकर ने अपने टीम के लिए जरूर। सामने प्रीतेश भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी। सीधा थर्ड मैन बाउंड्री से गेंद स्टंपों पर। अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने न्यू बैटर धनेश आउट है। चलो कैप्टन साई बाबा क्रिकेटर्स अर्दोना क्रिकेट टीम, बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम के कप्तान आपका कभी से इंतजार कर रहे हैं टॉस के लिए। 5 ओवर का मैच होगा, 1 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज। लेफ्ट हैंडर बैटर धनेश स्ट्राइक पर। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, टोटल भी अच्छा है, फाइटिंग टोटल है 57 का। छोटी गेंद हुक किया इस बार, गेंद अब बड़ी देर तक हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, ओहो थोड़ा सा आगे गेंद गिरी, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आज फील्डिंग में एक अच्छा कैच भी पकड़ा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर,
प्रीतेश ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, क्योंकि रनिंग कैच दोस्तों दिखने में आसान लगते हैं लेकिन गेंद सामने हाथों से दूर हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा प्रीतेश ने इस मैच में। एक अच्छा थ्रो देखने को मिला, बाउंड्री लाइन से सीधा रजत कुडालकर को वापस गया। तो आने वाले मैच का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। साई बाबा क्रिकेटर्स हरदोना क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया है बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम को। फिलहाल एक बार फिर से मैदान पर अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक लोअर फुल टॉस आड़े बल्ले से गेंद को खेला ऑन साइड पर। मिड विकेट पर साई लाते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, दूसरे रन के लिए रनआउट का खतरा और एक सफलता मिली। हाना हाना कर रहे थे और दूसरा विकेट वो भी रनआउट के रूप में भूमिका 11 क्रिकेट टीम का। डीजे न्यू बैटर मैदान पर महादेव। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर। तीसरा ओवर जारी है, आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। ओ बहुत अच्छी फील्डिंग, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही लाजवाब कैच पकड़ा और एक विकेट चला गया भूमिका 11 क्रिकेट टीम का। डीजे तीसरा विकेट चला गया टीम का। स्कोर रुका हुआ 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ, रनआउट का विकेट मिला, एक बेहतरीन फील्डिंग के साथ कैच को पकड़ा प्रीतेश ने। और देखना होगा वेदांग स्ट्राइक पर आ चुके महादेव का साथ देने के लिए। इस बार गेंद निकली थर्ड मैन की तरफ, क्या दूसरा रन बनेगा देखना होगा। एक रन पूरा किया कृष्णा गेंद के पीछे, थर्ड मैन बाउंड्री पर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, तीसरे रन के लिए हाना हाना कर रहे थे। शायद मेरे ख्याल से शाम फिर से ये रनआउट का खतरा था। 2 रन बन गए स्कोर में, 2 रन के साथ 3 ओवर समाप्त हुए। टोटल स्कोर 27 लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले अभी भी 2 ओवर का यानी 12 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए 30 रन।
मनोहर आ चुके बॉलिंग मार पर। हेलो चेक। 3 ओवर समाप्त हुए। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 30 रन। आने वाले मैच का भी टॉस हो चुका है। हरदोना क्रिकेट टीम गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजी करेगी बाल गणेश मांद्रिम क्रिकेट टीम। ओ छोटी गेंद विकेट कीपर को बीट करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन जो कि बनता हुआ स्कोर के खाते में। 22 का इशारा अंपायर का, बिल्कुल अपने अनोखे अंदाज में अंपायर जो कि सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। दया पेडनेकर ढेर सारा क्रिकेट भी खेल चुके हैं, आज भी क्रिकेट खेलते हैं। सामने एक बार स्ट्राइक पर वेदांग। इस बार घूमकर मारा, बहुत ही शानदार शॉट लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। पर ओ अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर चित्रा जो विकेट के पीछे, उनके हाथों में एक डॉट गेंद और मनोहर अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर, डीप पर फील्डर। क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, लेकिन होना चाहिए था। आपको विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगानी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से शाम थोड़ा सा मन में भय है, डर है। 2 विकेट रनआउट के गिर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा मन में भय है दोनों बल्लेबाजों में, क्यों और एक रनआउट के रूप में विकेट अगर न जाए, और इसीलिए सिर्फ सिंगल बना स्कोर के खाते में। इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, विकेट चला गया और एक सफलता मिलती हुई। 4था विकेट टीम का वापस, भूमिका 11 क्रिकेट टीम का। डीजे स्कोर रुका हुआ 33 रन पर। पहले ओवर में सिंगल, दूसरे ओवर में रन बने थे। 21 रन बने थे दूसरे ओवर में। 2 ओवर में टोटल था 22 का। ठीक ठाक लग रही थी भूमिका 11 कांड का, लेकिन वो सीधा डायरेक्ट रनआउट का विकेट रजत कुडालकर का और बाद में एक रनआउट का विकेट मैच में कहीं ना कहीं अब मात्र परेशानी कर गया। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। कुणाल न्यू बैटर, कुणाल न्यू बैटर और मनोहर अपने बॉलिंग मार पर। 4था ओवर जारी है मैच का। लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर वेदांग नाइक और मनोहर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ थोड़ी नीची रही इस बार गेंद, तेज गेंद टिप्पा खाने के बाद नीची रही। हल्का सा अपील अंपायर की और, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर। तो इस बीच में खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 33, लॉस ऑफ 4 विकेट।
गौतम आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में और सामने बैटर है वेदांग नाइक। लास्ट ओवर 24 रन। ओ बल्ले से लगकर गेंद विकेट कीपर चित्रा गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो एक डॉट गेंद के साथ बहुत अच्छी शुरुआत, एक अच्छी बल्लेबाजी की थी। 15 रन बनाए थे रजत कुडालकर ने, 2 ओवर में 22 रन थे। मैच बिल्कुल आसान लग रहा था। फुल टॉस, ताकत बिल्कुल नहीं लगाई, गैप में तो जरूर खेला है, देखना होगा। और जब तक बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते, 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। अब आने वाले 4 गेंदों का खेल बाकी है और 4 गेंदों में 22 रन चाहिए। फुल टॉस, ऑफसाइड पर इस बार स्लाइस किया, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। डीजे वाइड बॉल, नो बॉल, ये भी परेशान कर सकता है मैच में। ओ शॉर्ट पिच गेंद, ये मौका जरूर था लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। मौका जरूर था, कोशिश भी रही थी वेदांग की, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, फील्डर है मौजूद। शाम मेरे ख्याल से मैच आगे बढ़ा, जो नरेन ने 2 छक्के लगाए लगातार, वहीं पर एक ठीक ठाक स्कोर बन गया। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा दूसरा ओवर अच्छा रहा था, 21 रन बनाते भूमिका 11 ने। पहले ओवर में सिंगल साहिल वाइंगणकर को भी दाद देनी पड़ेगी, पावर प्ले में शांत रखा था बल्लेबाजों को। और ये लॉन्ग ऑन पर अर्जुन नेपाली गेंद के नीचे कैच को पकड़ते हुए साहिल ने बिल्कुल पहला और बेहतरीन गेंदबाजी की, सिर्फ 1 रन, लेकिन दूसरे ओवर में 21 रन 22 रन बनाए थे, तब मैच आसान था। लेकिन उसके बाद 2 रन आउट के विकेट, वो कहीं ना कहीं भूमिका 11 को परेशान कर गए। Well wishers Zaunasa, Mangesh Pahari, Siddhi Traders, Vernekar Jewelers, Riker Caterers,
Naresh Savar, Raghavendra Pednekar, Priya Travels owner Rahul Khedekar, our well-wisher Sangam Par, Sai Sagar Bar and Restaurant owner Sachin Kerkar, Sagar Engineering Works owner Manoj Mahekar, Munna Transport owner Sachin, Gaukar Constructions owner Jitendra, Venekar Jewelers, Lakshmi Optical owner Krishna Par, Sai Cooling Solution owner Sai Kamat, Manorama Wines owner Nitin Kumbarzuekar, Shetye Sales and Services owner Siddhanath Shetye, Parshekar Caterers owner Suresh Parshekar, Tople Caterers owner Nilesh Tople, social worker Vishwas Gauss, Gowda Builders and Developers owner Ratish Gowda, Pari Classic Catering and Restaurant owner Anand Naik, RK Trader Kota Supplier Rashid Saab. हांव हेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा फॉर ऑल द सपोर्ट आनी तशेंच आतां गेम चालू करया. बॅक टू द कमेंटेटर्स. For this third game of day 2. Rajesh along with Gopal in the middle. Mayur starts off with the full toss and gets whacked away down the ground on the very first delivery. Gone for 4. What a game previously. Rajat Kudalkar and co were cruising along nicely. At one stage, his run out, and then it was just mere time that taken by Autotech Panjim to win that game quite comfortably. 24 runs were required in that last over, and always difficult to get those 25, and especially on this particular surface and the dimensions that are here in Bicholim. This time, toe into the bat, but still one bounce over the ropes this time. 2 in a row, 2 boundaries in succession. Score moves on to 8 with that boundary. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. In case if you have joined just now, then this is Friend Circle organizing first all Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament. Full toss again. This time has he threaded the needle? No. Oh, fumble from the skipper. Saish on that occasion. Usually very quick. Saish aka Jordi. This time the right-hander Gopal on strike. Will be slight change in field. Maybe fielder from the long on boundary will come inside the 30-yard ring. Man at long on has been sent on the fence for the right-hander, and so does man on back to the square. So 2 fielders outside the 30-yard ring. This being the power play over. False start.
This time down the ground again. This time from Gopal, and that will be a boundary. So both the openers getting off the mark with the boundary in a similar kind of fashion. Score moves to 13. Arnav Singh has been providing us with all the scoring updates since yesterday. Officials in the middle, Sudan and Daya Pednekar, two of the very experienced umpires in the middle. Daya Pednekar having a call maybe from the ICC. Reverse swept, and that's been switched nicely towards the boundary for four. Fourth boundary in this particular over. A very expensive over from Mayur. Score moves on to 17 with that boundary. Well, you need to get runs, and that runs are being targeted in that very first over. Very good to see, as very risk-free cricket that has been played. Nobody there in that backward of point region. Again, this time over the top. Fielder just watching it sail over his head. Another boundary. Score moves to 21. After completion of one, it's 21 without loss. Bal Ganesh Mandram. Change in bowling. Shripad starts off with a full toss delivery, and that has been straight in the hands of the fielder, and it's a no ball as well. No ball called. So free hit for Gopal. Full toss delivery. That would have been played anywhere. Just out of reach of Rajesh. Free hit time. This time looking for the reverse. Maybe a clip on the side would have been getting a boundary, but not to be. Generating a lot of pace is Shripad. Very experienced Shripad Bandodkar. Free hit missed. Again, this time left alone, and that will be wide. Extras. A unique bit of style from Daya Pednekar, reminding us of Billy Bowden, back from the Kiwi, New Zealand. Full toss. This time straight to the fielder. Chance of a run out, and not quite. Just bouncing over the keeper. Will be a single. Very quick, that fielder inside the 30-yard ring at covers. Again, turn to the bat. Will just be one. Got the runs that they required in that first over itself. So now they're just trying to milk it around, maneuver the ball around for singles and doubles, which is at most necessary on this particular big ground here in Bicholim. That's nicely played, crafted beautifully. Down to back Crisway. Meanwhile, the fielder comes in, throws it back. 2 more runs added. Score moves on to 28. This being the second over in progress. Still 2 more deliveries remaining.
This partnership is growing right now. As far as the Sai Baba Aldona are concerned, they need to get wickets. Reverse swept. And that has been swept nicely. Too much work for that fielder. And he can't get there. No matter how quick you are, the outfield is lightning quick here in Bicholim. Score moves to 32 with that boundary. Again, using the pace of the bowler. Knew exactly what he was doing, Gopal. And just caressed it through the backward point region for a boundary. Big wide spaces. The skipper needs to be very agile in placing the fields. Right now, created some room, went on the back foot and just played it down to the sweeper cover. In fact, deep point. Single to end the over after completion of 2. It's 33. 33 without loss after completion of the second over. Bal Ganesh Mandrim. Change in bowling. It will be Paritosh. 33 without loss after completion of the second over. Bal Ganesh Mandrim. Again, trying for the reverse Gopal. Just the turn of the bat. Straight to the keeper. Dot delivery. So 2 winners from the previous games. FC cricketers from Vasco and also Autotech Panjim. This being the third game between Aldona and Mandrim. Straight to the field at cover. Chance. Not quite. Just a single on that occasion. Score moves on to 34. Pulled away. And pulled away for a boundary. One bounce over the ropes. Again, persisting with the short pitch deliveries, and that have been hammered with disdain authority by Rajesh. Score moves on to 38 with that boundary. Full toss again, and again in the gap. Another boundary, slow delivery picked. And that slow delivery has been met with the boundary yet again at the mid-wicket fence. Score moves to 42. So runs are coming thick and fast here for the Mandrim. Currently going at almost 14-15 runs per over. Will be definitely eyeing 60-70 on the scorecard in the remaining 2 overs. Short delivery, hammered away. And hammered away long. Well, that one has to scale down. That's gone very long. Maybe near that buffalo who is just resting there. Huge hit. Score moves on to 48 with that maximum. Again, turning out to be very expensive over this. So far, 15 runs have been scored of 5 deliveries. Last delivery coming up of this third. A quick look at all the sponsors for this tournament. Sri Naresh Sabar, ex-MLA Bicholim, Vernika Jewellers, owner Balakrishna. Tople from the Tople Caterers,
Parsekar Caterers, Suresh Parsekar, Vishwas Gamas, social worker, Sangam Par, social worker, Ratish Gowda, owner of the Gowda Builders and Developers, Mangesh Ferrari, owner of Siddhi Traders, RK Traders, Kota Supplies, owner Rasid Saab. Yes, Paritosh again, change of angle for him this time, coming over the stumps. 48 without loss right now. Goes down again, this time, oh, dropped, and that will be a boundary. Straight in and straight out. Easy chance, straightforward chance, and that has will just have to fetch the ball from the boundary. Excellent timing from Rohit. Gets off the mark with the 4. Score moves on to 56. Good delivery. And just nudged around for a single. Excellent running between the wickets by these two swift runners. These two, Rajesh and Rohit. Score moves to 57. This being the 4th over in progress. 2 more deliveries remaining in this particular over. Full toss and whacked away. Whacked over that man for half a dozen. Oh, excellent delivery. That has been knocked over. Brings in the Yorker. And that Yorker has produced the wicket. Still the best delivery in the book.
Looks like it has gone all the way. Is it? Yes, indeed it has. Half a dozen runs. Score move. Again a full toss and very good work from that fielder. Just behind the stump. Wide the signal from the umpire. Score moves on to 70. This being the highest total in the tournament so far. Good delivery. Excellent comeback by Saish. This time over covers. Too much work for the fielder. Can he get there? Yes, he does. Vicky, the fielder. And will be a couple. Score moves on to 72 with those two singles. Couple. This time trying to wind that up onto the onside. Good work by Mayur. And will just be one. Swing and a miss. Looking for the single. And that will be run out at the bowler's end. Sandrud will have to sacrifice his wicket. And chance to get his partner Rohit Mandrekar on strike. So Sandrud will be run out. So last delivery coming up. River swept. And swept in the vacant offside region for 4. Gets a boundary on the last delivery. So the target required for Sai Baba cricketers Aldon.
थैंक यू श्याम कलागुटकर। तो ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार पर पावर प्ले में और 78 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर पारितोष स्ट्राइक पर सिद्धू ये जोड़ी मैदान पर। और देखना होगा किस तरह से एक सामने बड़ा टोटल है 78 का टारगेट 78 रनों का। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर पर एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए डीजे। बड़ी साझेदारी बनी, 35 रन बनाए राजेश ने, गोपाल ने बनाए 21 रन और उसी की बदौलत एक अच्छा टोटल। अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा और लगभग बाउंड्री लाइन के भीतर गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 6 पर। बिल्कुल इसी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि सामने 78 का टोटल है, तो यही बल्लेबाजी का, और खास करके पावर प्ले में एक 18-20 रन तो बनाने पड़ेंगे इस मैच में। अपने बॉलिंग बार पर ऋषिकेश, छोटी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर गोपाल के हाथों में। 21 रन गोपाल की बल्लेबाजी में, राजेश ने बनाए 35 रन। इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट बल्ले से लगकर स्लिप पर फील्डर उनके हाथों में और इसी के साथ पहला विकेट चला गया टीम का डीजे। सिद्धू के आउट होने के बाद पारितोष का साथ देने के लिए इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड पर स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई, 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। विकेट भी खो दिया सिद्धू का। आते आते 4 रन दिवेश ने अपना खाता खोला। बहुत अच्छी गेंद, इस बार पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर हाथों में गोपाल के। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गोपाल आ चुके हैं बॉलिंग मार पर।
खुद का पहला, टीम का दूसरा। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर पारितोष उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। स्कोर रुका हुआ 10 पर। अभी भी बनाने हैं 68 रन, और 68 रन बनाने के लिए 4 ओवर का खेल बाकी। इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे, क्या मौका बनेगा कैच का? अपने ही फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ा और दूसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे दो विकेट वापस शुरू में। छोटी गेंद इस बार हुक, क्या फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर जाते, फाइन लेग से गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आते आते एक रन के साथ बाबू ने अपना खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 पर खुद के व्यक्तिगत दिवेश स्ट्राइक पर सामना करते हुए गोपाल की गेंदबाजी का। ऑन साइड पर जोरदार बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद जाके थोड़ी सी शरीर पे टकराती हुई और विकेट के पर जाते गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूसरा ओवर जारी है मैच का। एक लोअर फुल टॉस आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन गति में परिवर्तन किया था। इस बार थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, और जब तक मिड ऑन पर फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 12 पर। फिर से थोड़ा सा कवर पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर कोई बिल्कुल मौजूद नहीं था। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। मालूम है 78 का टारगेट है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, लेकिन इस ओवर में वो सफलता नहीं होती हुई बल्लेबाजों को। कट गया इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिला, खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में परिवर्तन, राजेश का स्वागत। एक अच्छा शॉट देखना होगा, दूसरे रन की कोशिश, लॉन्ग अप पर कवर से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 16 रनों पर, 2 विकेट पर 16 रन। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। शॉट फाइन लेग पर, फील्डर, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फ्रेंड सर्कल आयोजित ये रेनी क्रिकेट का टूर्नामेंट, ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम, आज दूसरा दिन। इस बार घूमकर मारा, बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे
स्कोर आगे बढ़ा, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। आगे निकले थे एक बार कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। मिड विकेट पर रघुनाथ कास्कर और पबाऊ आते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन फ्लिक किया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और डीप स्क्वायर लेग से जब तक जाते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। बोल्ड हुए उस गेंद पर, एक बहुत अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद, सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे दो चौके, दिवेश 13 रन बनाए, आउट होकर वापस गेंदबाजी में परिवर्तन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। कट का इस बार ऑफसाइड पर, अच्छा शॉट कवर पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल, गेंदबाजी में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। जो चौथा ओवर लेकर इस बार खेला, गेंद को बहुत अच्छी फील्डिंग, फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर, अपने टीम के लिए रन बचाए शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर ने, और गेंद वापस एक बार फिर से गेंदबाज गोकुल दास के हाथों में। चौथा ओवर जारी है, एक बड़ा टोटल सामने 78 का। अल्टी पल्टी लेकिन सफल नहीं रहे। एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली राजेश गावड़े, 35 रन बनाए, अच्छा साथ दिया गोपाल ने, 21 रन बनाए, पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बनी, और वहीं पर एक बड़ा टोटल भी बना दिया। सामने इस बार बॉलर अपने पालुत्र में गेंद को फील्ड करते, और एक फिर से एक बार डॉट गेंद। मैच थोड़ा सा दूर होता जा रहा है साई बाबा क्रिकेटर्स हरदोना क्रिकेट टीम की और से। इस बार घूमकर मारा ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बड़ी देर तक हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे कैच को पकड़ा, चौथा विकेट चला गया। इसी के साथ टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 27 लॉस ऑफ 4 विकेट। क्रिकेटर्स हरदोना क्रिकेट टीम को
गेंदबाजी में परिवर्तन आखिरी ओवर में रघुनाथ कास्कर और भाऊ आ चुके बॉलिंग मार पर इस अंतिम ओवर में और एक न्यू बैटर मैदान पर। अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर रोहित गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल। मैच लगभग फंस चुका है मैदान पर क्योंकि अभी भी चाहिए 50 रन और खेल बाकी है सिर्फ 5 गेंदों का। आने वाला मैच होगा, जो जीतेगा वो खेलेगा ऑटोटेक पंडी क्रिकेट टीम के साथ अगला मैच होगा। बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर शॉट, ये गोपाल गिन के नीचे कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलती हुई रघुनाथ कास्कर को और एक विकेट वापस निकलता हुआ साई बाबा क्रिकेटर्स अर्दोना क्रिकेट टीम का डीजे। शुरू है मैदान पर और एक नए बल्लेबाज हर्षद मैदान पर। रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ अपने बॉलिंग मार पर अंतिम ओवर का खेल जारी है। पांच चौके बल्लेबाजी में एक छक्का लगाया राजेश ने, 35 रन बनाए, 2 छक्के लगाए और आसान सा मौका मिला इस बार विकेट कीपर के लिए। आते आते और एक विकेट चला गया, आउट होकर वापस हर्षद टीम का लगातार जो कि 6ठा विकेट वापस निकलता हुआ साई बाबा क्रिकेटर्स हरदोना। नए बल्लेबाज विकी जाते हुए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर टोटल 27, लॉस ऑफ 6 विकेट, 27 रन, 28 लॉस ऑफ 6 विकेट। तो अभी भी 50 रन मैच मुकाबले पर दूर है और अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए ऑन हैट्रिक गेंदबाज रघुनाथ कास्कर उर्फ बाबू। सामने न्यू बैटर विकी। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर, गेंद को खेला ऑन साइड पर और लगभग ऑन साइड पर मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ विकी ने। कवर पर गेंद फील्डर, 2 फील्डर लेकिन उनके बीच में गेंद गिरती हुई और एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लगभग समाप्ति की और ये मुकाबला एक तरफी होता हुआ साई बाबा क्रिकेटर्स अर्दोना और बाल गणेश मांद्रेम के बीच में ये मुकाबला। अच्छा शॉट बॉलर के पास से लॉन्ग अप पर और गोपाल आते गेंद को फील्ड करते लॉन्ग ऑन से, लेकिन तब तक एक सिंगल और उसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। तो
Thank you, Ashok Naik, sir. Auto deck Panjim put into bat by Bal Ganesh Mandram. Rishikesh with the first delivery, and he'll be bowling to Sahil Waingankar. And his partner at the other end, Naren Sare. Naren Sare at the non-striking end will definitely be wanting to continue his merry way from the previous game. Looking for the reverse straight away. Missed out. And that's a dot delivery to start with. Again a reverse. This time to the field that covers. Again not taking the single. Will just be a dot delivery. 5 overs game this. First over being the mandatory power play over. Winner to take on FC Cricketers Vasco. This time along the carpet. Down to the fielder at wide-ish long off. Will just be one. Gets up the mark with that single, does Sahil. This time the left-hander on strike. Looks like wants the mid-wicket and the square leg on the fence. Fielder coming in from the cover boundary inside. And Sahil also needs to change his willow. A different bat might some produce runs for him. Full toss delivery, and this time carved away back to the point. Just be one. Sahil Waingankar. Maybe an instance wherein looks like it was in Panjim or somewhere. No, it was in Ponda, where he tried to take the bat of Surya, and Surya brought in him 3 bats, and all 3 bats were tested, and Sahil again chose the one which he was playing with. You can see some funny stories few months back. And Surya being the helm of everything. Nicely played down the ground. And that will just be a single. Maybe me, him, Gungru and Surya, whenever we are free, we'll have that challenge of who hits more. Surya and Gungru will take on each other. Certainly we'll be having a laugh, both of them. Meanwhile, another single. Score moves on to 3. Full toss down the ground. Up and over Sandrud's head. And that will go into the boundary for 4. Score moves on to 7 after completion of the first over. 7 without loss after 1 auto take Panjim. Change in bowling. It will be Gokul Das. 7 without loss. Sahil Waingankar back on strike.
Change in field for him. Back to the square. Deep mid wicket. Long on, long off. And deep point on the fence. Whereas the rest inside the 30-yard ring. Full toss delivery. Flicked away. And this time on the bounce to Rohit Mandrekar at the back to the square region. Nothing much of a timing in that shot. Had fallen over. Was on one knee when he was trying to play it behind square. Better timing. Some power in that one. Would have definitely got a boundary. But will get a single this time. Let's see how the left armer take on the left hand. This will be a good contest. Square leg mid wicket. Cow corner. Long on, long off on the fence. Whereas the rest inside the 30-yard ring. Big wide open space on the offside at the covers. But will fetch him a single, posting it down the ground. Score moves on to 9 with that single. Choosing to bowl first. The Bal Ganesh Mandrem after winning the toss. Autotech Panjim were invited to bat first. Currently a cautious bit of start by these two. Naren Sare along with Sahil Vaingankar. Here's Gokul Das into his first and team second. Reverse sweep again. And again missed. Will sneak in a single in form of leg byes. Sahil has tried it thrice now. And all 3 times he has not been connecting it well. Score moves to 10. Just that 5 overs need to be looking at 45, 50 or maybe more than that on this big ground here in Bicholim. Full toss, nicely played along the carpet. Down to Bhau. Will just be 1. Profoundly called as the Goa Police firing range. They are just ahead of Mauringe. Bicholim also marks the Goa Cricket Association ground, GCA B Division games that are played here on this particular surface during the cricketing season in Goa. Again the reverse and again missed. 4 times he has tried it and all 4 times he has missed it. We've been telling him from the commentary box that he has tried it. Previously tried it thrice, got a leg byes. Fortunate to not to go onto the stumps, and this one was very close. Excellent delivery. So far, pretty good bowling this by Gokul Das. This time adjusted the shot at the very last occasion. Was trying to go for the ramp and just pushed it at point. Single to retain the strike for Sahil. After completion of 2, it's 12. 12 without loss after 2. Autotech Panjim. Change in bowling, it will be Gopal. 2 overs, 12 without loss. Autotech Panjim, which is that moving over where Sahil and Naren decide that this is it. Not more holding back. We'll just have to get runs at will and get some big hits. Maybe some boundaries or maximums. Sahil very much capable of getting that. We've seen it time and time again. Just that 1 over, just those few deliveries that he needs. Just like that. This time over covers. Work for the fielder. And Naren Saleh towards the danger end has made it successfully. 2 more runs added. Score moves on to 14. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Covering a lot of sporting events, especially the leather ball cricket that we've seen across Goa. Nigam along with his brother Shubham, both very much fond of this game. Again reverse, and again he has missed it.
This time it's a leg buys. Sort of 5 times that he has tried, connected, not a single time has got 2 leg buys on those reverse sweeps that he has been trying to do. Maybe if he steadies himself, might get a maximum or a boundary over the square leg region. This being the 3rd over in progress. 15 on the scorecard. Narayan Saleh, left-handed batsman, back on strike. Shuffling across, this time in the air, fielder taken. Rajesh Gavde, you just can't keep him out of the game. Excellent work. Pritesh, 15 for the loss of 1. 3rd over in progress. Sahil Vaingankar still at the other end. Has just been joined by Pritesh. If you have joined just now, then this is Friend Circle presenting to you the first All Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament here in Bicholim. Today is day 2. Game between Autotech Panjim and Bal Ganesh Mandrem. This being the pre-quarter game. Winner to take on FC Cricketers Vasco. This time down the ground. Straight away, Sandrud has been kept busy. Oh, gone through! And gone through for 4. Misfield. And that is just... taken his eyes off the ball on the last occasion. Ball just bouncing over through his legs for a boundary. This time carved away and powerfully hit. And it's gone all the way the distance for half a dozen. And straight away after coming in, Pritesh has taken on the bowling. Keeper standing up at the stumps now. Change of plans. Good delivery. Just shortened his length on the last occasion. Dot delivery to end the over after completion of 3. It's 25. 25 for 1 after 3 overs. Autotech Panjim. In bowling, it will be Raghunath Kaskar in the bowling attack. Finally, some breeze. Nicely bowled. Right in the block hole. Good work by that fielder.
inside the 30-yard ring. Will just be one. Score moves on to 26. Could be a good ploy this by the Mandrim. Is just giving a single to Sahil and keeping him at the other end so that the other batsmen tried and bowled more deliveries. But Pritesh is a completely different gravy altogether. He's fallen over, no proper timing. Usually these kind of hits are back in the stands. But that time has missed it completely. 27. These two very much fond of their fitness, looking after their fitness. Proper diet, proper sleep, as they usually tell us. Usually Sahil Wangankar has been missing out of gyms these days. Full toss. And that full toss has been connected beautifully for a half a dozen, for a maximum. Score. Nicely played. Up and over this time. Straight to Gokul Das, but will just be one. The timing was perfect on that one. Went quickly towards that fielder at extra cover. And excellent work as well by Gokul Das to throw it back. 34 they move on to, this being the fourth over in progress. Will be eyeing to get at least 50-55 in the remaining deliveries. This time short delivery and missed. Just that the batsmen are more lakeside oriented batsmen. I've seen very less Rajat Kudalkar, then Sahil Wangankar, Punaji Kalangutkar, and also Syed Badi being the ones who target all the sides of the boundary, all the dimensions, all the grounds, different types of venues, and they play very well on those kind of surfaces. Meanwhile, a single to end the over after completion of 4. It's 35. 35 for the loss of 1 after 4 overs. Autotech Panjim. Change in bowling. It will be Rajesh Kaude bowling the final over. 35 for the loss of 1. Pritesh on strike. Can he get 2 or 3 maximums in this over? Is that the first one? No. Will just be 1 down to Rohit Mandrekar at the backward square leg region. It's gone over, a bit of fumble, but will just be 1. Played away. And played away for 4. Easy picking. Short delivery. Short and wide. And switched perfectly for a boundary. Score moves to 40 with that boundary for Sahil. Again, trying to wind that up. Is he going to come back for the second bit of fumble from the fielder? Throw at the bowler's end. And good work by that fielder who was backing up. Otherwise, Sahil would have been coming in for the third. But got the strike that he needed. Score moves to 42. Last 3 deliveries remaining. Bowler bowling from the round the stumps. Full toss and no proper connection.
in the air and taken. Big long mids. And the fielder coming in from the square leg region has taken a wonderful catch. Sahil departs for 20. New man in Diptesh at the striking end. Last 2 deliveries remaining. 42 for the loss of 2. Here's Rajesh. False start. Maybe somebody moving behind the bowler's arm. Left alone, and that will be wide. Extras. Score moves to 43. Good delivery, quick delivery. And that will be run out at the bowler's end. Pritesh trying to get back on strike and has sacrificed his partner Diptesh, who is heading back in the pavilion. So he's been run out without scoring a single run. 43 for the loss of 3. Last delivery coming up in this innings. Again, turned the bat and will take a single successfully. And that will be all. So 44 runs have been scored by Autotech Panjim after they were put into bed by Bal Ganesh Mandrem. 45 runs will be the target required to win as far as Bal Ganesh Mandrem are concerned. It will be change in voice at the start of the innings. Ashok Naik sir with you in the commentary box.
टारगेट है। साहिल वाइंगणकर ने बनाए 20 रन, 14 रन बनाए प्रीतेश ने। और एक 5 ओवर की बात की जाए तो 9 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी गोपाल गडेकर और उन्हीं के साथ राजेश गावड़े, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर जिन्होंने पिछले मैच में सिर्फ पावर प्ले में एक सिंगल रन दिया था, वो साहिल वाइंगणकर ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी के लिए। साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर पावर प्ले में पहले ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट, इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे सिक्सर राजेश के बल्ले से। इस बार ऑन साइड पर फाइनल की तरफ खेला गेंद को, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, पहले रन के लिए निकले जब तक फील्डर आते और थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड करते, तीसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इन 3 रन के साथ टोटल पहुंचा 7 रन पर, 9 रन पर माफ कीजिए। और अंपायर का इशारा 4 रनों का, तो 4 रन मिल गए स्कोर में, चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 10 पर। एक अच्छी शुरुआत बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम की 45 रनों के जवाब में। इस बार ऑफ साइड पर खेला गेंद को, कवर पर फील्डर, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 45 का टारगेट 9 रन के साथ और पहला ओवर जारी, स्कोर हो चुका है 10। इस बार फिर से एक बार फुल टॉस, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट, लंबी दौड़ लगाई लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। जब तक गेंद को फील्ड करते, 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 12 रनों पर। फुल टॉस गेंद, इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल, ओवर थ्रो, बैकअप हो रहा था, अच्छा बैकअप, नहीं तो और भी रन बन सकता था स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 13 रनों पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं गोपाल और साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ ओवर, क्योंकि पहली गेंद फुल टॉस गेंद पर एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बड़ा शॉट लगाया राजेश ने। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार गेंद सीधे जाके पैरों पे टकराई, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान से। अर्जुन नेपाली दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए
एक दो विकेट बहुत जल्द लेने पड़ेंगे ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम को मैच में वापसी करने के लिए, क्योंकि अगर और 10-12 रन बन गए तो थोड़ा सा मैच आसान हो जाएगा बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम के लिए। देखना होगा फिलहाल इस ओवर में क्या होता है। अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर, और सामने बैटर है राजेश गावड़े। इस बार छोटी गेंद स्क्वायर लेग पर, डीप पर, फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते और एक आराम के साथ सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार पर। अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को कवर की तरफ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। पहला रन पूरा किया और अच्छी फील्डिंग, बैकअप अच्छा था, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर टोटल पहुंचा 15 रनों पर। 45 का टारगेट है, अभी भी चाहिए 30 रन। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। बात छोटी गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और रोकने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, 4 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में डीजे। इस बार थोड़ा सा खींचकर खेला हुआ शॉट, गेंद हवा में, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर सीधे हाथों में और पहला विकेट चला गया। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर डीजे। दो चौके लगाए, एक छक्का लगाया राजेश ने अपने बल्लेबाजी में और कहीं ना कहीं सफलता के तलाश से बिल्कुल ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम को एक अच्छा कैच, सफलता मिली अर्जुन नेपाली को और वो एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर और सामने न्यू बैटर आ चुके हैं रोहित मांद्रेकर, जो उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। स्कोर 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। अपटम से बाहर गेंद, पीछा किया था, खेलना चाहते थे, गेंद बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल अतिरिक्त बढ़ गया स्कोर में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 20 रन पर। 20 लॉस ऑफ 1 विकेट। छोड़ा, इस बार जाने दिया, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, एक डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लाइन पर अर्जुन नेपाली और सामने बैटर है रोहित मांद्रेकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ देते हुए गोपाल। और इस बार स्विच हिट, थर्ड मैन बाउंड्री पर साहिल वाइंगंडकर को बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए।
19 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, मनोहर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर और एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर वो आ चुके हैं। 26 टोटल स्कोर, 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और 18 गेंदों का खेल बाकी है 3 ओवर का। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, कट होकर थोड़ी बाहर की तरफ निकली, उछाल भी मिला, कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद चली गई विकेट कीपर चित्रा के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए मनोहर अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत बेहतरीन शॉट, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर और एक आराम के साथ सिंगल पूरा किया गोपाल ने अपने स्कोर के खाते में। अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर रोहित मांद्रेकर जो 6 पर खुद के व्यक्तिगत एकमात्र विकेट आउट कर वापस 18 पर राजेश गावड़े 2 चौके 1 छक्का लगाया। मनोहर अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल, हाना हाना कर रहे थे, दूसरे रन के लिए पलटे। ओहो ओहो, दूसरे प्रयास में मौका बना और रनआउट के रूप में गोपाल आउट होकर वापस दूसरा विकेट, 1 रन मिलता हुआ सिर्फ स्कोर के खाते में। डीजे आगे बढ़ाते हुए दूसरा विकेट चला गया, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। ओ बहुत अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथों में। लगभग बीट किया बल्लेबाज रोहित को इस गेंद ने, मनोहर ने, और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए 45 का 45 का 5 ओवर में। इस बार बैकफुट पर कट किया गेंद को, ऑफ साइड पर गैप में खेला हुआ शॉट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक सिंगल के लिए निकले, दूसरा रन पूरा किया। सही लाते, गेंद को उठाते, जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 30 रन पर। टोटल 30 रन 2 विकेट पर। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लॉन्ग ऑफ, एक मिड ऑफ, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से आखिर में दिशा दी सिर्फ गेंद को गली की तरफ, और पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा, जी नहीं, बच गए वहां पर। बहुत अच्छा तालमेल, अच्छी दौड़, थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में, कृष्णा फील्डिंग कर रहे थे गली पर और मिले 2 रन स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32, लॉस ऑफ 2 विकेट। चाहिए 13 रन, 12 गेंदों में 13 रन मैच को जीतने के लिए। जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा एफसी क्रिकेटर्स के साथ, जो आने वाला मैच होगा।
गेंदबाजी में परिवर्तन, 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। प्रीतेश बॉलिंग मार्ग पर, सामने उमेश का साथ देते हुए रोहित के बल्ले से अब तक एक छक्का लग चुका है, खुद के व्यक्तिगत 10 पर बल्लेबाजी करते हुए। अपने फील्डिंग को ठीक ठाक किया प्रीतेश ने। चौथे ओवर की शुरुआत, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर, फील्डर रनआउट का खतरा। ओहो, और जब तक गेंद को थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, अच्छा तालमेल दोनों के बीच में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो थोड़ा सा विकेट कीपर को कसरत करनी पड़ेगी, ऊपर रहा। सामने एक बार फिर से अब बैटर रोहित मांजरेकर प्रीतेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे। इस बार गति में परिवर्तन, स्लो ओवर 1, जल्दी खेल बैठे। इस बार विकेट कीपर के हाथों से गेंद स्लिप की तरफ निकली, गेंद फील्ड होती हुई एक डॉट गेंद के साथ प्रीतेश धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बार प्रीतेश फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। स्करले पर फील्डर है मौजूद, डीप स्कर, ओहो, एक आसान सा मौका निकला था स्करलेग पर। अर्जुन नेपाली स्करलेग पर फील्डिंग कर रहे थे और जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन मौके पर यह मौका दिया सामने बल्लेबाज को, रोहित मांजरेकर को। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग भी करनी पड़ेगी उसी के साथ फील्डर को। प्रीतेश अगली गेंद लेकर, सामने बैटर है उमेश। यह बेहतरीन शॉट, सामने बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे कैच छूटा और वहीं पर एक बार फिर से एक बहुत अच्छा शॉट, सामने चौका मिलता हुआ स्कोर में। साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का अंपायर पर। चौथा ओवर जारी है, आने वाला 1 ओवर का खेल बाकी है। रोहित मांजरेकर और उन्हीं के साथ उमेश, ये जोड़ी मैदान पर। बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम इस बार ऑन साइड पर, फिर से एक बार गैप में वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
और मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 रन। फुल टॉस इस बार ऑफ साइड पर कट किया गेंद को कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन।
and Balganesh Mandram. Balganesh Mandram winning the toss and deciding to bowl first in this very much important encounter as far as it's concerned for both these teams. Team will be reaching the quarterfinals that will be played in the evening. Let's see which team topples each other to play that quarterfinal. So far have been excellent, both these teams, not giving too much of time to think about for the rest of the teams when they are batting or bowling. Have got rid of a very much what you can strong batting of Autotech Panjim, which just got defeated by the Balganesh Mandram earlier, and now up against a very strong, much likely the contenders in this tournament, FC Cricketers Vasco. In this particular game, Daya Pednekar and Amol Sawant. Rishikesh yet again in the bowling attack. That's a no ball to start with, and that's been carved away by Buddy. And we'll find a couple. Is he going to come back for the third? No, just settling for a couple. So now this will be a free hit. It was pitch shot outside that cement block. So this will be a free hit now. Opportunity for Buddy to open his arms, as he usually does on most of the occasion. Swing and a miss. Again trying to go up and over the onside. Missed it completely. Dot delivery. If you get less than 10 out of Buddy, definitely you have bowled a good over. Usually goes bonkers at the very start. Short delivery and played away. Over the cover region, and that will be for Score moves on to 7 with that boundary. Arnav Singh has been providing us with all the live scoring update. Dot delivery, nevertheless. And all the live streaming has been done by Photosonic Productions, covering a lot of sporty events in the entire Goa, in the Goan cricketing circuit. Covering this particular tournament, Friend Circle presenting to you the first All Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament here in Bicholim. Good delivery. That one came back in chance. No, not quite. No ball again. And this will be yet another free hit. This time it will be his partner, Asif Zamadar, who would be on strike.
maybe having some problems in that landing area. So far, two extras. First one, which one was pitch short outside the cement block, and now this being just overstepped. Trying to get in some extra bit of pace, extra bit of zip. Just stepping over. Score moves on to 9. Free hit time. Let's see if we can capitalize on this free hit. Asif Zamadar. Meanwhile, change in field as the new batsman is on strike. Up and over. And will find just one to get the mark for Asif. Score moves on to 10. This being the first over in progress. So far, 4 deliveries have been bowled, and the 4 deliveries have produced 2 no balls. Edged away and taken. Wicket that of Syed Badi in the first over. Rishikesh getting that wicket. New man in. Lup. Straight away going for the reverse. Missed it completely. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 10. 10 for 1 after 1. FC Cricketers Vasco. Change in bowling. It will be Gokul Das in the bowling attack. 10 for the loss of 1 after 1. FC Cricketers Vasco put into bed by Bal Ganesh Mandrim. This time turned the bat. Maybe was trying to hit it over the covers. Good recovery by Bhau in the end. Just 1. Brings his partner Revan Mutagi on strike in this over for the first time.
Previously faced a single delivery, couldn't quite get anything near the bat. Dot delivery to end that over, and now has the opportunity. Slight change in field for Raven. Man at covers. This time trying to play it on the onside. Chance of run out at the bowler's end. Oh, direct hit would have been curtains, but not to be. Shied the stumps and it was missed. Leg by is a signal given by the umpire. Maybe Gokul Das needs to come here often on this particular venue, as this being the Goa Police firing range. Usually they come here to practice and needs to practice the target. 3 stumps to aim at and he missed all 3. Again a reverse sweep, missed. Dot delivery nevertheless so far has been excellent with the bowling performance. All the bowlers of Balganesh Mandram started off with Rishikesh and now Gokul Das also bowling that fine line just outside the off stump. This time outside edge, fallen over and will go down as a drop chance. Might have just falling short, or maybe that he was very late to react on that one. Single taken. Score moves to 13. In case if you have joined just now, then this is Friend Circle presenting to you the first All Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament. Here in Bichole, man, that is big. That is massive. It's out of here. One delivery remaining. Again, this time the field taken. Thank you, DJ. 2 overs 19 for the loss of 2 wickets. FC cricketers Vasco put into bat by Bal Ganesh Mandram. New man in Yasin Chingan Gutti at the non-striking end. And it will be Gopal. Starts off with a short delivery, trying to pull that one, missed it completely. Maybe just showing it to the umpire that it was above his head, but no, it wasn't. It was very much in the range of pulling. Still waiting for the umpire's decision.
It's a dot delivery. That's up in the air. Fielder getting underneath and won't be able to cut it off. Opportunity gone begging. Would have been trying to be polite. Whenever I try to ask you, then only if I tell you to. Meantime, we have got a very interesting game on our hands. Score moves on to 22 with those 3 runs. Short delivery, just trying to cut that one. Will find a single. Gets off the mark with that single, does Yasin. Score moves to 23. This being the 3rd over in progress. 2 more overs remaining after this. Again, trying to muscle that over the onside. But will find only a single straight to the boundary at the square leg region where Rohit Mandrekar is patrolling that fence. Just 1. 24 on the scorecard. 24 for the loss of 2. Have lost the 2 big wickets. Nicely played over covers. Excellent shot. Excellent timing on that one. That will be a boundary. With that boundary. 28 for the loss of 2. 3rd over in progress. Last delivery coming up of this 3rd over from Gopal. Again, this time swept and swept a long way. In the bowling attack. Played away and played away powerfully. Again in that same particular region. This time
Leg by is a single given by the umpire. Score moves on to 41. Again brings Yasin on strike. The time he has come in, he has looked busy. Just gone over the bowler's head. Awkward bit of bounce to him. Will just be one. Score moves on to 42. This being the penultimate over. One more to follow after this. In total of exactly 9 deliveries remaining. Nick outside edge and taken. What a terrific catch that is. Using his height to good effect. Timing his jump to perfection. .42 for the loss of 3 wickets. New man in Akash. Left-handed Akash on strike. Can he go big on the very first delivery? He's certainly trying for it. And will get a single in form of leg buys. Score moves on to 43 with that single. This time down the ground. And will just be one. Single 20 over after completion of 4. It's 44. 44 for the loss of 3 wickets after completion of 4 overs. FC Cricketers Vasco. Officials in the middle, Amol Sawant along with him. Daya Pednekar, both very experienced umpires from this part of the world. Scoring has been handled by Arnav Singh. And the entire YouTube streaming has been done by Photosonic Productions. Change in bowling, it will be Rajesh. That's up in the air. Fielder won't get there on the bounce to him. By the time the fielder comes in, throws it back, 2 more runs have been added. Score moves to 46. Reverse swept and swept in the gap. Has it gone all the way? Has it gone the 52, they move on to last 4 deliveries remaining in this innings.
This time miscued. And just be. Hello. Hello. Score moves on to 54. With that single. 55 moves on to 55. Full toss. And played it on the onside. Sandrud. And has it gone? No. Good work by Sandrud and his partner. Will just be a single. The score moves to 56. Last delivery coming up in this innings. Excellent in the field on the boundary rope. Those two fielders at the mid-wicket region. That's big. But the fielder will come in and kept his composure, but that will be gone, I guess. And looks like that will be just a couple.
58 रनों का। और गोपाल के साथ राजेश ये जोड़ी मैदान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की यासीन सिंगनगुट्टी ने 20 रन बनाए, 2 लाजवाब छक्के लगाए। और देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी होती है। फिलहाल बॉलिंग में पहला ओवर पावर प्ले का ओवर। विशाल बॉलिंग बात पर। कवर पर खेला इस बार, डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहले रन के लिए निकले, दूसरे रन के लिए रनआउट का खतरा। ओहो, और पहला विकेट चला गया इसी के साथ रनआउट के रूप में। आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में गोपाल, और गोपाल के आउट होने के बाद न्यू बैटर उमेश मैदान पर। विशाल केवट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, और ओहो हो क्या छूटा। एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और दूसरा विकेट लगातार बैक टू बैक। पहले ओवर में पावर प्ले में स्थिति शुरू में बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम के स्कोर रुका हुआ 2 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 58 का 58 का टारगेट है, और न्यू बैटर मैदान पर रोहित मांद्रेकर। विशाल केवट अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छोड़ा, इस बार जाने दिया। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया, स्कोर पहुंचा 3 पर, और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद, ओ फ्री हिट की गेंद, एक डॉट गेंद, बिल्कुल फ्री हिट पर कोई रन नहीं बना। स्कोर का हुआ 3 पर 2 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 5 ओवर में 58 का टोटल मैच को जीतने के लिए।
फुल टॉस इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। देखना होगा अंपायर का इशारा आना बाकी। टोटल पहुंचा 9 पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा भीतरी किनारा टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर सैयद बद्दी गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विशाल केवट पावर प्ले का पहला ओवर सामने 58-58 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और जो जीतेगा शाम को खेलेगा क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। फुल टॉस उड़ाया स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर हवाई फायर और गेंद चली गई 6 रन के। रन आने वाला मैच होगा मोरलेम बॉयज और फ्रेंड सर्कल पेडने के बीच में। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क कीजिए। फ्रेंड सर्कल पेडने और मोरलेम बॉयज दोनों टीम कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चलिए टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। स्ट्राइक पर फिलहाल रोहित मांद्रेकर और आसिफ बॉलिंग बार पर, यासीन गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले का 2 विकेट वापस रनआउट के रूप में, स्कोर 15 रन 2 विकेट पर। दूसरे ओवर की शुरुआत यासीन अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने बैटर है रोहित मांद्रेकर। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त। अच्छी गेंद इस बार, कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में और विकेट कीपर गेंद को उठाते फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑफसाइड पर एक वाइड लॉन्ग अप, एक डीप थर्ड मैन। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। बाउंड्री लाइन पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट पर, एक शॉर्ट कवर पर फील्डर है और यासीन अपने बॉलिंग मार्ग पर। शॉर्ट ऑफ प्लेन ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीचे रही, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक डॉट गेंद के साथ लगातार एक अच्छी शुरुआत यासीन की अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और स्कोर रुका हुआ 15 पर 2 विकेट पर।
इस बार गति में परिवर्तन, थोड़ा सा स्लोअर वन, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं था। जब तक गली पर आते, वाइडिश गली से गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 16 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी मैच का। जो जीतेगा वो शाम को खेलेगा ठीक 5 बजे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज के दूसरे दिन का। लेकिन उससे पहले देखना होगा क्या होता है आने वाली गेंद पर। ओ बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए उस गेंद पर, एक बड़ा धक्का लगता हुआ। थोड़ा फिर से एक बार परिवर्तन मैदान पर, फील्डिंग में ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ, एक कवर पॉइंट, एक डीप थर्ड मैन, एक लगभग लॉन्ग अप और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। इस बार थोड़ा सा अपेश खेला लेकिन नो मैच लैंड में। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, क्या तीसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। 2 रन, तीसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन जब तक थ्रो को कलेक्ट करते गेंदबाज यासीन तब तक 3 बहुमूल्य रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अपना खाता खोला 3 रन के साथ ऋत्विक ने और टोटल स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 19 लॉस ऑफ 3 विकेट, 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हल्के से इस बार ऑफ साइड पर बहुत अच्छा क्रिकेट, टैप किया गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री पर, फील्डर एक सिंगल पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, 1 रन मिल गया। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट, 20 रन 3 विकेट पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन। सुशील गेंदबाजी के लिए, फुल टॉस,
और इस बार स्क्वायर लेग पर हवा में गेंद, लेकिन फील्डर को मौका नहीं मिला और गेंद चली गई 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। 24 लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस बार एक लोअर फुल टॉस, हल्के से दिल स्कूप शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक बैकअप हो रहा था फील्डर के साथ, गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 2 बहुमूल्य रन रोहित के खाते में और 2 रन मिलते हुए बाल गणेश मांद्रम क्रिकेट टीम आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर 26, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खूप पैसा। 26 लॉस ऑफ 3 विकेट। अल्टी पल्टी की कोशिश, एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपने बॉलिंग वार पर जो कि खेल जारी है, तीसरे ओवर का सुशील गेंदबाजी करते हुए। ओ ये गेंद नो बॉल का इशारा, लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर गेंद को नहीं रोकते सैयद बद्दी तो ये गेंद निश्चित रूप से 4 रन के लिए फाइन लेग बाउंड्री पर जा सकती थी, लेकिन अपने फील्डिंग के साथ सैयद बद्दी ने ये गेंद को रोका लगभग फुटबॉल की तरह। और नो बॉल के साथ आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद, फ्री हिट की गेंद, कोई फायदा नहीं मिला रोहित को। इस गेंद पर एक शॉट होना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छी गेंद सुशील की, जो अपने आप को बिल्कुल सही समय पर संभाला और एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सामने बैटर है रोहित मांद्रेकर। ओ ये बार, इस बार स्क्वायर लेग पर, ओहो क्या छूटा और गेंद चली गई 6 रन के लिए। रोहित स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। डीजे डिलीवरीज 21 रन। 17 रन बने पिछले ओवर में सुशील की गेंदबाजी में। कैच जरूर छूटा, गेंद निकली 6 रन के लिए, लेकिन देखना होगा आने वाला ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मैच में। जो चौथा ओवर
2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। ट्वेल्व डिलीवरी 21 रन। फारूक आ चुके गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण ओवर दोनों टीमों के लिए। ये मैच में अगर ये ओवर अच्छा रहा, मैच में वापसी भी होगी एफसी क्रिकेटर्स की। इस बार बल्ले से नहीं चले, ऐसे लगे क्या दूसरा रन बनेगा। मिड विकेट पर फील्डर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन और मिला, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 38। 11 गेंदों में 20 रन। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके रोहित मांद्रेकर। 2 चौके 1 छक्का अब तक उनके बल्लेबाजी में। ओहो, ये नीचे रही गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बार ऑन साइड पर खेला, फील्डर है मौजूद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 39। 19 रन चाहिए। और खेल बाकी है 9 गेंदों का। नौ गेंदों का खेल, 19 रन। स्ट्राइक पर बैटर है ऋत्विक। फुल टॉस, लेकिन फायदा उतना नहीं मिला। शायद इस गेंद पर एक बड़ा शॉट होना चाहिए था। ऋत्विक के बल्ले से लॉन्ग ऑन पर फील्डर आसिफ गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 18 रन अभी भी चाहिए टोटल मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 40। और टॉस के लिए चलिए प्लीज फ्रेंड सर्कल पेडने और मोरलेम बॉयज दोनों टीम कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज चलिए टॉस के लिए आइए। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार अपील, लेकिन उस अपील को नकारा अंपायर ने। गेंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। चलिए दोस्तों, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए। कैप्टन आ चुके हैं, फ्रेंड सर्कल पेडने के कैप्टन आ चुके हैं। तो मोरलेम बॉयज कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए। स्कोर रुका हुआ 40 पर। 40 रन 3 विकेट पर। एक अच्छा ओवर चलता हुआ ये फारूक का। ओ लगातार ये डॉट गेंद, पिछले ओवर में 17 रन बने थे, इस ओवर में कमबैक किया एफसी क्रिकेटर्स ने। सिर्फ 3 रन मिले इस ओवर में, मैच में कमबैक किया। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर, और देखना होगा फिलहाल मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है। मोरलेम बॉयज कैप्टन प्लीज आइए टॉस के लिए। चलो दोस्तों आइए, जल्दी आइए प्लीज। मोरलेम बॉयज मोरलेम बॉयज कैप्टन आइए प्लीज, जल्द से जल्द। और मैच को जीतने के लिए चाहिए 18 रन। 6 गेंदे और 18 रन। लास्ट ओवर 18 रन, 3 ओवर तक सब कुछ ठीक ठाक था बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन जो चौथा ओवर रहा वो बहुत अच्छा रहा ओवर। सिर्फ 3 रन मिले और वहीं पर एक बार फिर से वापसी के एफसी क्रिकेटर्स ने, लेकिन देखना होगा फिलहाल किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है। स्ट्राइक पर ऋत्विक और अंतिम ओवर, लास्ट ओवर,
6 गेंदे और 18 रन। टॉस कौन जिंकलं? तुम्ही बैटिंग आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए और वापस आउट करते और एक सफलता मिलती हुई। और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीधा आसिफ गेंद के नीचे कैच को पकड़ते हुए और एक विकेट चला गया बाल गणेश मांद्रे। चार गेंदों में 18 रन। हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया, अपना खाता खोला रघुनाथ ने इस सिंगल के साथ और अब मात्र स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोहित। 3 गेंदों में मैच को 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। 17 रन चाहिए 3 गेंदों में। अगले मैच का टॉस हो चुका है। टॉस होके बल्लेबाजी करने का फैसला फ्रेंड सर। मोरलेम बॉयज आपको फील्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इस बार खेला गेंद को ऑफसाइड पर मिडा पर मौका कैच का और एक विकेट चला गया डीजे। ऋषिकेश अब मैच थोड़ा सा फंस चुका है मैं कहूंगा मैदान पर। अगर नो बॉल फ्री हिट ये ही परेशान कर सकता है एफसी क्रिकेटर्स को। पुलर लेन के गेंद अल्टी पल्टी की कोशिश। ऋषिकेश स्ट्राइक पर एक डॉट गेंद। बहुत अच्छा ओवर रहा जो इससे पहले का ओवर रहा जो 3 रन दिए सिर्फ फारूक ने। और ये मैच लगभग अब मात्र समाप्ति की ओर। बोल्ड हुए उस गेंद पर और एक विकेट चला गया बाल गणेश मांद्रेम क्रिकेट टीम का। तो यहीं पर मुकाबला ये समाप्त हुआ। मैच को जीतती हुई एफसी क्रिकेटर्स और इस मैच का मैन ऑफ द मैच यासीन मैन ऑफ द मैच इस मैच का। चलिए अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा। फील्डिंग के लिए चलिए प्लीज मोरलेम बॉयज क्रिकेट टीम ओपनिंग जोड़ी चलिए। और जैसे ही खेल की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में आवाज शाम कलंगुट करके उससे पहले मैन ऑफ द मैच के लिए आइए यासीन मैन।
So match between Friend Circle Pernim and Mollem cricketers. Friend Circle Pernim winning the toss, deciding to bowl first. In fact, bat first in this encounter up against the Mollem cricketers. Pravin Rane will be bowling from the road end, and he'll be bowling to Gaurav Desai. Along with him is his brother Nana at the other end. So both the brothers up in the middle, up against Pravin Rane. So here we go with the first delivery. And straight away, trying to sweep that one. Dot delivery to start with. Fabulous organizing this by the Friend Circle. First all Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament here in Bicholim. Match between Mollem cricketers and Friend Circle Pernim. Friend Circle Pernim winning the toss and deciding to bat first. 5 overs game, first over, mandatory power play over. Straight to the field, a chance of a run out. Oh, that will be gone. Miscommunication between both the batters. Straight away, Babu just placing it towards that fielder. And Nana didn't quite respond to him. So first wicket down. Nana, without facing a single delivery, will have to head back in the pavilion. He's gone without scoring. It's none for one. New man in, the skipper in the middle. No Sokashalkar. Down the leg side, and that will be wide. Extras. Score moves on to 1. Earlier today, it was the FC cricketers Vasco reaching the quarterfinals.
Full toss delivery. And that will be a no ball. A single has been also taken on that one. So this will be a free hit now. Free hit time. And let's see if Gaurav Desai can capitalize on this free hit. Short of runs, the friend circle Pernim. Knocked him over, but won't be given out, as this was a free hit. Will just be a single. And gets off the marble and will be 1. Single taken, score moves on to 6 with that single. Nicely played through the covers. Straight to the field at extra cover and will just be another single. Single taken. Again, some terrific bowling this by the Molim bowlers. Molim cricketers. Started off with Praveen Rane, aka Poro, with that first over. And now Tanvesh is backing it up nicely as well. Full toss delivery again, looking for the reverse chance of a run out at the bowler's end. Onto the batsman. Straight found him in the middle while throwing. Another single taken. This time coming from the bat of Naresh. It's getting darker now. Maybe we'll have some showers in few minutes. Played nicely, made room for himself, shuffled across, and that's a welcome boundary as far as the friend circle Pernem are concerned. Score moves on to 12. Again, nicely played and gone. Straight to the fielder. This time, Gaurav trying to go up and over that fielder at mid-off. Has given a catch to that fielder. And a big wicket. Gaurav also departs. It's 12 for 3. Friend circle, Pernem in deep, deep trouble. After completion of 2 overs, it's 12 for the loss of 3.
Good delivery. And will find a single. Quite comfortably done by Prasad. 2 more runs to the total. Score moves on to 15 with those couple. Gets off the mark with a couple. Shivnath from the far end. In case if you have joined just now, then this is Friend Circle's first All Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament here in Bicholim. Good delivery, undercutting that one. And will come back. Excellent running, good awareness by both the batsmen in the middle. A single taken. Score moves to 16. Reverse swept. Up in the air. And will fall safe. And that will bounce into the boundary for 4. Much needed boundary as far as the Friend Circle Pernem are concerned. Score moves on to 20 with that boundary. This being the third over in progress. 2 more overs remaining in this innings. Definitely eyeing to get at least around 40-45 with the kind of bowling they have got. The threat of Gauresh Nagwekar lies when this team plays against any opposition. Nicely played. And will find just 1. Score moves on to 21. Third over in progress. Earlier in the day, it was FC cricketers Vasco reaching the quarterfinals. Previously, in fact yesterday, it was Surla reaching the semi-finals. Nicely played through the gap. And will find just 1. Single 20 after completion of 3. It's 22. 22 for the loss of 3 wickets. 22 for 3 after 3. Friend Circle Pernem. Change in bowling, it's Sanju. And starts off with a wide. Does Sanju. Good delivery. And they have sneaked in a bye. Score moves on to 24. Clouds thundering. Maybe we'll have... That's big. And that's gone to distance. Half a dozen runs. Excellent timing on that one. Score moves to 30 with that 6. This time coming from the bat of Naresh. Onto the leg stump and hit across quite comfortably over the square leg region for maximum. Reverse sweep. And this time we'll find a boundary. Excellent batting this. Getting the boundaries in succession. Score moves on to 34. So currently putting the foot on the accelerator has been Naresh. In need of his team. 34 on the scorecard now. This being the 4th over in progress. 1 more to follow after this. Again reverse, and this time
A proper connection. Overcovers for half a dozen. Yet another 6. Well, turning out to be a very expensive over this. It started off with a wide, then a bye, and then 6-4-6. A different kind of code this, which has been pondered upon by Naresh. Again a reverse, but this time opportunity missed. Gone begging. Dot delivery. Down the leg side, and that will be wide. Extras. Well, it turned out to be a very expensive over this. Started off with a wide, now also has produced an extra. This time ball just dipping. Dot delivery to end the over. After completion of 4 overs, it's 41. 41 for the loss of 3 after completion of 4 overs. 19. It was 22 for the loss of 3 after the third over, and they have produced 19 runs of this over. So we'll be looking, Prasad and co, to get more out of this particular over as well. 41 for the loss of 3. Starts off with a good delivery, Yorker line delivery, chance of run out and missed by Pravin. That will be a single for Prasad. Change in bowling, it's Shankar bowling the final over. Again, this time fortuitous. It's running toward the fence. Fast outfield here in Bicholim. And has he tried to stop it in? Or is it a boundary? We'll have to wait for the umpire's decision. That's gone for 4. So it's a boundary. Confirmation comes from the umpire. So Naresh off and running. Score moves to 46. A defendable total now on the scorecard as far as Friend Circle Pernem are concerned. A late flurry of boundaries from that second over itself. This time hitting the toe end, or maybe leg bye is given by the umpire. And the team total has reached on to 49. Last 2 deliveries remaining in this innings. Shimmer down the wicket. Will be coming back for the second. Cheetu after it. And 2 runs taken. And with that 50 up for Friend Circle Pernem.
गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से, और सामने बैटर है प्रवीण राणे। 56 रन टोटल मैच को जीतने के लिए, और नॉन सेकंड एंड पर बैटर है तेजस। इस बार पहली गेंद पर बड़ा गाज, और गेंद चली गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। चार रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का, मुरलीम बॉयज क्रिकेट टीम का। गौरेश राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर, और सामने बैटर है प्रवीण राणे। ओ बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद सीधी जाके बल्लेबाज पैरों पे टकराती हुई विकेट के पर आते गौरेश उर्फ बाबू गेंद को फील्ड करते, और वापस एक बार फिर से गेंद गौरेश नागवेकर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 4 पर बिना किसी नुकसान से। ओ ये फिर से स्कूप करना चाहते थे, इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग पर। पावर प्ले में कोई फील्डर मौजूद नहीं था, जो कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग बाउंड्री पर, और उसके बिल्कुल ये सोच थी, लेकिन सफल नहीं रहे। गेंद फील्ड होते हुए वापस एक बार फिर से गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। हाँ ये का आया आया नहीं वो आया ये का आया ये पैक कर ना बोया बोया आदि गौरेश नागवेकर दाहिने से ओवर द विकेट। अच्छा शॉट मिड ऑन पर फील्डर, लेकिन थोड़ी आगे गेंद गिरते हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। नौशक कशालकर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। चलो कैप्टन अगले मैच के लिए कामिनी क्रिकेटर्स और श्री साकलेश्वर कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आइए, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। का पहला ओवर, स्कोर 7 रन तेजस और तेजस के साथ प्रवीण राणे, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजों की मुरलीम बॉयज क्रिकेट टीम। और देखना होगा आने वाला दूसरा ओवर, फील्डिंग में बदलाव हो रहा है मैदान पर, जो कि पावर प्ले पहला ओवर समाप्त हुआ गौरेश नागवेकर का। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद दूर थी, बल्ले से थोड़ी सी नीची भी रही, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, जो गेंद 4 रन के लिए जा रही थी, 2 रन बचाए अपने टीम पर। ऑफसाइड पर एक लॉन्ग अप, अल्टी पल्टी की कोशिश, पॉइंट पर कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओके, तो कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार थोड़ी सी ऑफकटर अंदर आती हुई, फिर से एक डॉट गेंद। चलो कैप्टन आइए प्लीज, कामिनी क्रिकेटर्स कैप्टन, जो अगला मैच होगा श्री साकलेश्वर और कामिनी क्रिकेटर्स के बीच में,
तेजस स्ट्राइक पर। इस बार ऑन साइड पर गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर गौरेश नागवेकर कैच को पकड़ते हुए और सफलता मिलती हुई पहला विकेट चला गया टीम का। डीजे टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द। पहला विकेट चला गया, तेजस आउट होकर वापस, और तेजस के आउट होने के बाद प्रवीण राणे का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर। रजत, थैंक यू। न्यू बैटर रजत मैदान पर कुणाल की गेंदबाजी का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप पर थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, गति में परिवर्तन, एक डॉट गेंद। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वही पर रुका हुआ, टोटल 10 पर 1 विकेट के नुकसान पर। टोटल स्कोर 10 रन 1 विकेट पर। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टोटल पहुंचा 10 पर। कैप्टन आइए प्लीज, कामिनी क्रिकेटर्स कैप्टन आइए टॉस के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन और पहली गेंद पर विकेट चटकाते हुए नाना शुरुआत करते हुए, जो कि तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है, और तीसरे ओवर में पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई स्कोर 10 पर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे न्यू बैटर मैदान पर। टोटल टारगेट है मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में। अगला मैच होगा श्री साकलेश्वर और कामिनी क्रिकेटर्स, इन 2 टीमों के बीच में। राउंड विकेट इस बार, अच्छा शॉट मिड विकेट। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील विकेट कीपर का, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। एक डॉट गेंद के साथ नाना आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज। स्कोर 11 रन 3 विकेट पर। न्यू बैटर शिवनाथ, थैंक यू सर। तो नए बल्लेबाज शिवनाथ बल्लेबाजी करने के लिए सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। एक सफलता दिलाते हुए नाना अपने बॉलिंग मार्ग पर एक अच्छा ओवर चलता हुआ, जो तीसरा ओवर फेड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट की तरफ, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरा रन देखना होगा। अच्छी फील्डिंग, बैकअप भी अच्छा था, और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन पर के दोनों बल्लेबाजों ने आते आते 2 रन के साथ शिवनाथ ने अपना खाता खोला, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर। 3 विकेट के नुकसान पर 13 रन। इस बार अल्टी पल्टी की कोशिश, और शॉर्ट हैंडमैन पर स्लिप से निकले फील्डर गेंद को फील्ड करते।
जब तक थ्रो पहुंचता है विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में मुरलीम बॉयज क्रिकेट टीम। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर, थोड़ा सा फिर से परिवर्तन फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के ओर से, और राउंड विकेट भी अपने बॉलिंग मार्ग पर नाना एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन, अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लंबी दौड़ लगाई, देखना होगा रोकते हैं या नहीं। गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर, 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। चार रन मिलते हुए स्कोर में प्रसाद, इस बार एक लोअर पुल टॉस, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कवर पॉइंट पर। थोड़ी अगर अगल बगल में गेंद तो 4 रन बन सकते थे, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग, बिल्कुल चौकरने फील्डिंग कवर पॉइंट पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। प्रसाद गेंदबाजी करते हुए, खेल चौथे ओवर का जारी, आने वाला 1 ओवर का खेल बाकी है। स्विच हिट, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 22, लॉस ऑफ 3 विकेट। थोड़ा सा बाहरी किनारा लेती हुई गेंद कवर पॉइंट पर, फील्डर फिर से एक बार गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और जुड़ता हुआ, और स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर सामना करते हुए प्रसाद की गेंदबाजी का। आने वाला मैच होगा श्री साकलेश्वर और खामिनी क्रिकेटर्स, इन 2 टीमों के बीच में अगला मैच होगा। अपसाइड पर कट किया, इस बार कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और इसी के साथ और एक विकेट चला गया। रनआउट के साथ चौथी सफलता मिलती हुई फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम को। डीजे अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ
4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25। लास्ट ओवर टू गो। प्रसाद इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आशीष आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 26 लॉस ऑफ 4 विकेट। 26 रन 4 विकेट पर। अभी भी चाहिए 30 रन और 30 रन बनाने के लिए 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने पड़ेंगे। ओ लाजवाब टाइमिंग। इस बार स्विच हिट कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए चली गई। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की। मिड विकेट पर फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। आखिरी ओवर का खेल जारी है। आने वाला मैच होगा श्री साकलेश्वर और खामिनी क्रिकेटर्स के बीच में। कवर पर फील्डर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर एक सिंगल बनता हुआ स्कोर में स्कोर पहुंचा इस सिंगल के साथ। टोटल 33 टोटल स्कोर 33 लॉस ऑफ 4 विकेट। क्या इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री पर गेंद फील्ड होती हुई थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में। फिर से एक बार सिंगल और लगभग मुकाबला समाप्ति के और चलता हुआ। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 22 रन और लास्ट बॉल। अल्टी पल्टी वाला शॉट एक स्लोवर वन फुल टॉस गेंद और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए चली गई। तो ये मुकाबला इसी के साथ समाप्त होता हुआ और
आनी आपलो 12th मॅन मातसो बेगीनच्या बेगीन कॉमेंट्री बॉक्सान धाडचो. गेम युट्यूबार टेलिकास्ट जाता सो थंयसर प्लेयराचें नांव येता आनी आमकां खबर ना की खंयचो प्लेयर खंयचे बॅट्समॅन आतां फुड्यान खेळटात ते. सो मातशी रिक्वेस्ट करता 12th मॅनाक की मातसो तेणी येवन बसका घेवची हांगासर. फॅनूय आसा हांगासर, त्याच्या भायर खुर्ची आसा. मातसो बेगीन येवचो आनी बसचो हांगा. कृपेश पालकर to start off the proceedings. And he's been hiked away on the very first rock. And that's gone for 4. Boundary to start with. Nicely played up in the air. Oh, the infield. And that will be a couple of runs. Swapnil along with Janu in the middle. With the ball, it is the very experienced Krupesh Palkar. That's up in the air. Fielder will fall short of him. Nicely played. Again through the offside. This time through the covers. Fielder in pursuit. And will just pull it back in. And they have taken 3 runs in the end. Excellent running between the wickets. So moves on to 17 with those 3. Fabulous bit of batting this. Taking the full advantage of this power play over. So dot ball to end the over after completion of 1. It's 17. 17 without loss after the first over. It will be Saniket Palkar in the bowling attack. Sanket. Apologies, it's Sanket. Match between Sri Sakreshwar taking on Kamini. Kamini cricketers winning the toss and deciding to bowl first in this encounter. First over, a very expensive over from Krupesh Palkar, which has costed 17 runs. Reverse sweep, oh, and gone. Onto the stumps. That's a big wicket. Well, Swapnil was looking good, and he has to head back to the pavilion.
That will be wide to start with. Extras. They are Pednekar along with Sudan in the middle as the match officials for this particular encounter. So that will be a no ball. So this will be a free hit now. Opportunity for the batsman to go after the bowling. Let's see if we can capitalize. He does. And the gap though on the bounce to the fielder will just be 1. Score moves on to 19. Excellent bit of batting performance at the start, and now after that wicket of Swapnil has certainly got the extended run of flow in check. Excellent delivery. Again a dot ball. And we saw some lightning there. Maybe it keeps it at bay. Doesn't come here. Good delivery. Sudden rise in bounce. Excellent bowling this by Sanket. Mixing his pace up pretty quickly. And also the slow deliveries that he has been bowling. Rolling the fingers over. Nobody there. The fielder will just have to fetch the ball from the boundary. Again, short delivery and played nicely. Too much work for the fielder. And he won't get there. Full toss. That's gone through. Fielder just hitting the tree. And will be a couple of runs. 2 more to the total after completion of the second over. It's 25. 25 for the loss of 1 after completion of 2 overs. Sri Sakreshwar. Quick look at all the sponsors for this tournament. Change in bowling. It will be Amir Khedekar. Meanwhile, look at all the sponsors for this tournament. Sri Naresh Savar, XMLA Bicholim. Lets it go, and that will be wide. Sri Naresh Savar, XMLA Bicholim, Verneka Jewelers, Balkrishna, Shetye Sales and Services, Siddhanath, Shetye, Pari Classic, Anant Naik, Tople Caterers, Nilesh Tople, Parsekar Caterers, Suresh Parsekar, Vishwas Gavas, Social Worker. Short delivery and pulled away. Fielder can't get there. Oh, maybe damaging. It's a no ball as well. So this will be a free hit now. Short delivery and that's gone for 4. Sangampar. So Nitin Kumbar Zuekar, Sai Calling Services, Sai Kamath. Reverse sweep missed. Mahalakshmi Opticals, Krishna Ganesh Par. Pednekar Motor Driving School, Raghvendra Pednekar. Gaonkar Construction, Jitendra Gaonkar. Munna Transport, Sachin Madhu Malvankar. Sagar Engineering Works, Manoj Mayekar. Raikar Caterers, Muktesh Raikar. And
Sai Sagar Bar and Restaurant, Sachin Kerkar. A big thank you to all the sponsors for this tournament. A short pitch delivery this time will be a dot ball. This being the third over in progress. 2 more overs to follow. Currently 31 for the loss of 1 wicket. Sri Sakreshwar. That's taken. And taken quite cleanly. Second wicket down. Just trying to flick it across. But the fielder was in perfect position to catch that one. New man in Vinayak Rane. Amir Khedekar has picked up that wicket. Excellent bit of bowling. Targeting the stumps, just a flick, and that fielder at short fine taking that catch. Vinayak Rane, the new man in. That's big. And with some power, it has gone for 4. 1 bounce over the ropes. Gets off the mark with the boundary. Does Vinayak. Score moves to 35 with that boundary. Again, just bowling it short. Shorter deliveries have been easier to put away, especially with some pace. This time gone through. Field after the ball. Is he going to cut it off? He won't. That's another boundary. 2 boundaries in succession for Vinayak. Score moves to 39. So runs are coming thick and fast as far as the Sri Sakreshwar are coming. (39) for the loss of 2 wickets. This being the third over in progress. 2 more to follow after this delivery. And on the right path right now. Again played. Again 1 bounce over the ropes. It's a no ball as well. So this will be a free hit. Score moves to 44. Well. Third boundary consecutively. Again trying for that same hit. This time missed. Missed by the wicketkeeper, ricocheting, and that's byes given. Single to end the over in form of byes after completion of 3. It's 45. 45 for the loss of 2. Change in bowling. It will be Paresh. Swing. Missed. Looking for a quick single. Chance of run out. Not quite. Not collecting it cleanly. Leg byes. In fact, given as bat. Yes, indeed. Runs out the bat. Score moves to 46. This being the penultimate over. 11 more deliveries remaining in this innings. Put into bat.
the Sri Sakreshwar after winning the toss by the community cricketers. Swing missed. Dot delivery. Again, just trying to shuffle across and play it on the onside. I tried to thread a gap between the cover field. Would be a better option. There's a long wide spaces between the cover and the sweeper cover on the fence. Again, excellent delivery. That will be a dot ball. Bowling with a consistent line outside the off stump is Parish. Nicely played. Oh, gone through. That's gone for 4. You don't often see that from that man. Usually very safe in the field, especially in the outfield. And with that 50 up for Sri Sakreshwar. They move on to 50. Outside edge, just falling short of the field. And that will be 1. In case if you have joined just now, then this is Friend Circles presenting to you the first All Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament here in Bicholim. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Reverse sweep. Is he going to come back for the second? He definitely will. Also interested in the third, but denied by his partner. For just a couple, score moves to 53. After completion of 4, it's 53. 53 for the loss of 2 after completion of 4 overs. Sri Sakreshwar. Change in bowling. It will be Chetan bowling the final over. 53 for the loss of 2 wickets. Sri Sakreshwar put into bed by community cricketers. Last over coming up, and it will be bowled by Chetan. That's gone all the way. Half a dozen runs. Again, Janu this time with that maximum. Again, going over the top. And drill down the ground. And will be another single. Score moves to 62. With that single. This being the last over in progress. 3 more deliveries remaining. Can Vinayak just muscle some out of the park, which he usually did after he came at the wicket. Swing missed. Dot delivery. Again, 66 with that boundary.
Excellent bit of timing. Through. And it will. Last delivery in this innings. This time again a wide. More extras. Just trying to bowl away from the hitting arc of the batsman. Is Chetan and paying the price. Score moves to 62. 72. संकेत और संकेत के साथ परेश ये जोड़ी मैदान पर ओपनिंग जोड़ी देखने का पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं पहला ओवर लेकर श्री साखड़ेश्वर क्रिकेट टीम की ओर से एक सामने बड़ा टोटल है पावर प्ले महत्वपूर्ण रहेगा
परेश स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है संकेत। पहली गेंद शपल होकर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का। विठोबा गेंदबाजी कर रहे जो पावर प्ले में, और वाइड बॉल के साथ रनों का खाता शुरू हुआ। बैकफुट पर कट किया इस बार, लेकिन फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 2 पर। जो जीतेगा वो खेलेगा आने वाला मैच फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के साथ। अगला मैच होगा। विठोबा अपने बॉलिंग मार्ग पर और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए परेश और परेश के साथ संकेत। संकेत और परेश ये जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत और बॉलिंग मार्ग पर विठोबा अगली गेंद लेकर। फुल टॉस उड़ाया इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद, और अच्छा कैच को पकड़ते हुए पहला विकेट चला गया टीम का। न्यू बैटर ऋषिकेश मैदान पर। एक अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच पकड़ा, सफलता मिली विठोबा को पहले ही ओवर में पावर प्ले में। सामने टारगेटेड 73 का 73 रनों का मैच को जीतने के लिए, लेकिन जो शुरुआत होनी चाहिए थी खामिनी क्रिकेटर्स की वो नहीं हुई। पावर प्ले में एक विकेट खोती हुई, और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। ऋषिकेश सामने और विठोबा राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार घूमकर मारा गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे पहला चौका चौके के साथ अपना खाता भी खोला ऋषिकेश ने, और सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। स्विच हिट की कोशिश, लेकिन गेंद जाके सीधी पैरों पे टकराई। गेंद फील्ड होती हुई और वापस आते हुए विठोबा अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया शॉट के लिए। 2 फील्डर है बाहर पावर प्ले में 38 सर्कल से। और विठोबा अगली गेंद लेकर राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये फुल टॉस, इस बार अच्छा शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते थ्रो करते जब तक विकेट कीपर के पास। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और नो बॉल का इशारा अंपायर का। तो नो बॉल के साथ और 1 रन मिला स्कोर में, और आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद, और देखना होगा फ्री हिट पर क्या होता है। सामने परेश स्ट्राइक पर उस फ्री हिट का सामना करेंगे, और विठोबा अपने बॉलिंग मार्ग पर। आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद पर एक अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 2 फील्डर गेंद के पीछे, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज ऋषिकेश, और फ्री हिट पर मिले 2 रन टीम को स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा टोटल 10 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 10 रन टोटल स्कोर
एक विकेट पर। फुल टॉस, इस बार फिर से एक बार उड़ाया ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। दो फील्डर एक बार फिर से गेंद के पीछे, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। तो 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा, 12 पर पहुंचा, एक विकेट के नुकसान पर। 12 रन एक विकेट पर पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद। आने वाला मैच होगा जो 4 ओवर का होगा। अगला मैच 4 ओवर का मैच होगा। 4 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले, और फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर स्वप्निल, क्योंकि 2 मैच बाकी है अभी भी। स्वप्निल आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, और स्ट्राइक पर बैटर है ऋषिकेश। बहुत ही लाजवाब शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में सफलता मिलती हुई दूसरा विकेट चला गया। चलिए थोड़ा न्यू बैटर जरा जल्दी चलिए अपने दोस्तों, क्योंकि कर दिया बल्लेबाजी में, शानदार बल्लेबाजी की जानू ने। और देखना होगा फिलहाल ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के कृपेश पालकर, वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी में, पावर प्ले में आगे निकले, इस बार डाउन द ग्राउंड, और मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट पर एक लाजवाब शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे करते हुए आने वाली अगली गेंद का। इस बार ऑन साइड पर अच्छा शॉट, और जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। दूसरे रन के लिए थोड़ा पलटे जरूरत है, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड और अच्छा थ्रो, और एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में टीम के कृपेश के। इस बार फिर से एक बार ऑन साइड पर, फाइन लेग पर फील्डर है मौजूद, कैच को पकड़ा, विकेट चला गया। तीसरा विकेट वापस कामिनी क्रिकेट टीम का। डीजे बैटर मैदान पर परेश। स्वप्निल अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, एक अच्छी फील्डिंग,
शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद, एक सफलता स्वप्निल को मिलती भी खेल जारी है दूसरे ओवर का, और स्कोर रुका हुआ 19 पर 3 विकेट के नुकसान पर 9 विकेट। फिर से एक बार कोशिश रही थी बल्लेबाज की बड़े शॉट के, लेकिन ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर डॉट गेंद। 73 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। तीसरा ओवर जारी है मैच का। प्रशांत गेंदबाजी कर रहे, राउंड विकेट। बिल्कुल उसी लाइन पर फिर से एक बार डॉट गेंद। आने वाले 2 मैच बाकी है। जो ये मैच शुरू है, जो जीतेगा वो खेलेगा फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के साथ अगला मैच, जो 4 ओवर का होगा। 4 गेंदबाज। थोड़ी नीचे रही ये गेंद, पिछले 2 गेंद लगातार जो कि थोड़ा सा उछाल मिली थी, लेकिन ये नीचे रही। और लगातार 3 डॉट गेंद, 3 बिंदी गेंद के साथ प्रशांत अपने बॉलिंग मार्ग पर जो दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कृपेश स्ट्राइक पर इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर दूर है। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 20 पर। 53 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। अच्छा शॉट, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन पर फील्डर, एक सिंगल और 1 रन मिला। एक ओवर बड़ा ओवर खेलना पड़ेगा, बड़ा ओवर रन बनाने का जो कि कोशिश करनी पड़ेगी खामिनी क्रिकेटर्स को, कम से कम एक 20-22 का, नहीं तो ये मुकाबला थोड़ा सा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। फिर से डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। सफलता जरूर नहीं मिली इस ओवर में प्रशांत को, लेकिन बिल्कुल एक भी मौका नहीं दिया बड़े शॉट के लिए बल्लेबाजों को। सिर्फ 2 रन मिले और 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। डीजे शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और सिर्फ सिंगल ही मिलता हुआ स्कोर के खाते में। बॉलर नेम प्लीज। उमेश जानू गेंदबाजी करते हुए, राउंड विकेट। ऑन साइड पर फिर से एक बार सिंगल, लेकिन एक सिंगल डबल का मुकाबला नहीं रह चुका है। अब इस मैच को जीतने के लिए कामिनी क्रिकेटर्स को चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, नहीं तो धीरे धीरे ये मुकाबला गेंदे कम और स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन, ये बिल्कुल स्थिति दिखाई देती हुई। ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर सीधा फील्डर, और इसी के साथ और एक विकेट चला गया टीम का। चौथे विकेट का पतन होता हुआ कामिनी क्रिकेटर्स का। डीजे तन्मय जानू गेंदबाजी करते हुए,
खुद का पहला, टीम का चौथा ओवर। सामने न्यू बैटर तन्मय, और तन्मय का साथ देते हुए कृपेश। कृपेश ने आते आते एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन बाद में डॉट गेंदें ज्यादा दिखाई देते हुए कृपेश की बल्लेबाजी में। पुल किया इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर सीधे हाथों में, और तन्मय वापस। पांचवा विकेट चला गया टीम का। डीजे मैच होगा वो क्वार्टर फाइनल का मैच। तो नचिकेत न्यू बैटर मैदान पर, और बॉलिंग मार्ग पर जानू। हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक। इस बार थोड़ी सी हवा में मौका बनेगा, और हैट्रिक मुकम्मल करते हुए पहला हैट्रिक टूर्नामेंट का जो इस फ्रेंड सर्कल आयोजित गेंदबाजी का हैट्रिक मुकम्मल। स्कोर 23, लॉस ऑफ 6 विकेट। 4 ओवर समाप्ति के बाद। कैप्टन आइए प्लीज फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। है 72 रन, और कुरनेश जो पहली गेंद पर सफलता मिलते हुए 10 रन, और नए बल्लेबाज आमिर जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। 7वां विकेट चला गया। मैच में सिर्फ औपचारिकता बाकी निश्चित रूप से यहां से लेकर, क्योंकि 5 गेंदे और 50 रन, हर गेंद पर छक्का लगा तो भी मुश्किल रहेगा। अच्छा शॉट बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन पर फील्डर, एक सिंगल। एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 24, 24 पर 24, लॉस ऑफ 7 विकेट। शॉर्ट पिच बाउंसर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। श्री साकलेश्वर क्रिकेट टीम ने बल्लेबाजी में 72 रन बनाए, 73 रन। मैच को जीतने के लिए खामिनी क्रिकेटर्स को अल्टी पल्टी वाला शॉट, और जब तक गेंद फील्ड होती थर्ड मैन पर एक सिंगल फिर से मिलता हुआ स्कोर के खाते में। तो आने वाला मैच होगा 4 ओवर का, क्योंकि आज समय है लेकिन रोशनी बिल्कुल कम हो चुके मैदान पर, और इसीलिए मैच 4 ओवर का हो रहा है। ऑफ साइड पर कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, फिर से एक बार सिंगल। आखिरी ओवर, और पूर्णेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। बैकफुट पर कट किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद चली गई।
4 रन के लिए गेंद तो इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ मैच को जीतती हुई श्री साखळेश्वर क्रिकेट टीम। कैप्टन आइए प्लीज श्री साखळेश्वर क्रिकेट टीम, टॉस के लिए आइए प्लीज। मैच होगा फ्रेंड सर्कल पेडणे क्रिकेट टीम के साथ, 4 ओवर का मैच। Reverse swept and straight away goes for a boundary. Gets off the mark with the 4. Does Nana. So Prashant has been given the ball. It will be a good delivery. Dot delivery. Again, this time touch fuller. And will pick up a single. Score moves on to 5. 4 overs game. This first over being the mandatory power play over. Apart from that, all the rest of the overs are in contention of fielding 5 fielders outside the 30-yard ring.
This time Babu goes downtown. And one bounce. Excellent work. Didn't let it go, Atish. Excellent work from him. It was 4 all over it. But he never gave up. Ran towards it and just pulled it back. Along with his partner, working in tandem in stopping a certain boundary for his team. Couple of runs to Babu to get the mark. This time trying to go over the top, appealing. Not out, says the umpire. Dot delivery. Again, this time much power in this one. Can Atish get there? No. One bounce over the ropes for 4. Excellent bit of timing. The fielder's inside the 30-yard ring and gets the boundary. So change in bowling, it will be Swapnil. Front circle Pernem deciding to bat first against Sri Sakreshwar. Team winning will be reaching the quarterfinals and will be playing against the FC cricketers. Swing missed. Nicely played, straight to the fielder. Both the fielders were stranded in, but good recovery by them. Just quickly realizing to get back on strike. This time a dot delivery. So far Swapnil has been pretty tied with his bowling line. Apart from bowling it straight, he's been just trying to curve it outside the off stump. Nicely played. Up in the air, fielder after it, and will fall safe. A couple of runs, and is coming back for the third. Chance of a run out at the keeper's end. Not quite. 3 runs have been taken. Score moves on to 14 with those 3. All the scoring update has been given us by Arnav Singh, and all the live updates on YouTube through the live streaming done by Nigam Naik and his team, that is Photosonic Productions. Nicely played through the gap. That went like a tracer bullet. Extremely powerful and extremely quick. And Daya Pednekar gets into work. Second over in progress. This time pulled away. And pulled away down to deep square leg. Coming back for the second. No, just settling for 1. Quickly that fielder onto it. Score moves to 19. This being the second over in progress. 1 more delivery to follow. After that, 2 more overs will be remaining. Just due to bad light, this game has shortened to 4 overs per side.
Please be aware of that. Reverse sweep missed. Dot delivery to end the over after completion of 2. It's 19 without loss. 19 without loss after 2 overs. Reverse sweep missed opportunity. Dot delivery. Leg bar. In fact, it's off the pad. Dot delivery. One more to follow after this. We'll be trying to get at least around 40-45 on the scorecard. 10 runs per over could be difficult on the surface. Whacked away. And whacked away powerfully. Behind square for a maximum. Half a dozen runs. Score moves to 29 with that 6. Well. Excellent bit of footwork. Knew exactly that the short delivery that will be bowled to him. And this time getting back in the position to pull that one over the fine leg for a maximum. This time over covers. On the bounce to the fielder will just be 1. Score moves to 30. This time Nana. And he sends this one over the ropes for a maximum. Well, both the brothers are making a complete mess out of the bowling attack of the Sri Sakreshwar. Score moves to 36 with that maximum. 36 without loss after 3. Going at 12 runs per over. Friend circle Pernam. Quick delivery, and this time played straight to the point fielder on the boundary rope and coming back for the second. Excellent running by these two. 2 more runs added. Change in bowling, it's Vithoba. Score moves to 38 with those couple. 5 more deliveries remaining. And this time he'll be gone. Some bat onto his legs. 38 for 1.
new man in Gaurash Nagwekar, aka Gungru Dada in the middle. 38 for the loss of 1. 4 more deliveries remaining in this innings. And straight away blasted down the ground. Is he going to come back for the second? No, just settling for one. Excellent work from Atish. Throwing it exactly over the bowler's arms. Will just be one gets off the mark with that single. Score moves on to 39. Quick look at all the sponsors for this tournament. हेलो 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 फील्डर गन को फील्ड करते थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैकअप भी बहुत अच्छा था कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं जो जीतेगा इसके बाद खेलेगा जो आज के दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा एफसी क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम के साथ ओ बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर सिक्सर 6 रन के लिए रनों का खाता शुरू होता बा श्री साखळेश्वर क्रिकेट टीम का
और फिर से एक बार तगड़ा शॉट, गेंद हवा में मिड विकेट पर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। थ्रो विकेट कीपर के हाथों में गौरेश के, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 7 रन पर। 43 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। एक अच्छी शुरुआत एक बड़े शॉट के साथ स्वप्निल, और स्वप्निल के साथ जानू आज पिछले मैच में जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल की थी, मैन ऑफ द मैच का भी हकदार रहे। अपसाइड पर इस बार बाहरी किनारा लेती हुई गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल 8 रन पर। 43-43 का टारगेट है। 11 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे श्री साकलेश्वर क्रिकेट टीम को। और पहले ओवर में पावर प्ले में जो बड़ा शॉट होना चाहिए था वो लगा चुके हैं बल्लेबाज मैदान पर। एक वाइड यॉर्कर, तेज गेंद, काफी गति के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तेज गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं गौरेश नागवेकर, और धीरे धीरे आते हुए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल चलता हुआ। पहला ओवर जो पावर प्ले का 4 ओवर का मैच है, 4 गेंदबाज। शॉपल होकर खेलना चाहते थे, बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत अच्छी गेंद, और पहला विकेट चला गया इसी के साथ श्री साकलेश्वर क्रिकेट टीम का। डीजे एक बड़ा शॉट लगा अगर खुद के व्यक्तिगत 7 रन पर आउट होकर वापस स्वप्निल, और स्वप्निल के आउट होने के बाद जानू का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर। दीप्तेश न्यू बैटर। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन 1 विकेट पर। दूसरे ओवर की शुरुआत कुणाल गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस, मिड विकेट पर गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर, सिक्सर, 6 रन के लिए। मिले 6 रन स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक सिंगल से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 15 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है मैच का, और अब लेफ्ट हैंडर बैटर सामने स्ट्राइक पर, तो उनके लिए राउंड विकेट कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ। शफल होकर खेला गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन फील्डर बहुत दूर है, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, हाना हाना कर रहे थे दूसरे रन के लिए। शायद खतरा बन सकता था, लेकिन अपने आप को रोका, और जब तक गेंद पहुंची विकेट कीपर गौरेश सावड़ देसाई के हाथों में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। छोड़ा जाने दिया, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। सुदन और सुदन के साथ दया पेडनेकर, ये अंपायरों की जोड़ गोली। कमेंट्री बॉक्स में श्याम कलंगुटकर, मैं अशोक नाइक, मेरे साथ अर्णव स्कोरिंग की जानकारी देते हुए।
इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। आज दूसरे दिन, कल के दिन में सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम, जो पहली टीम सेमीफाइनल में, बहुत ही लाजवाब शॉट। इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, सिंगल के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 4 ओवर का मैच है, अच्छा टोटल है, सामने अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। एक विकेट जरूर खोया है स्वप्निल, लेकिन जानू और जॉनी के साथ दीप्तेश, ये जोड़ी मैदान पर। कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर घूमकर मारा। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, क्या दूसरा रन बनेगा देखना होगा। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, लंबी बाउंड्री है। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 22 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। आगे निकले इस बार गेंद हवा में, कवर पर मौका कैच का, एक फुल टॉस गेंद, लेकिन कैच दे बैठे और दूसरा विकेट। गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 21 यानी 21 रन। न्यू बैटर विनायक मैदान पर, और लक्ष्मण उर्फ नाना गेंदबाजी पर, अल्टे पलटे वाला शॉट देखना होगा। फील्डर गेंद के पीछे, एक सिंगल, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद को थ्रो करते 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। सामने अगर बात की जाए तो आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन बने थे फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के स्कोरिंग में। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, थोड़ी नीची भी रही, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। थोड़ी सी बातचीत दोनों के बीच में, विनायक और विनायक का साथ देते हुए दीप्तेश, जो दीप्तेश बल्लेबाजी कर रहे 3 पर, जानू आउट हुए, एक छक्का लगाकर 12 पर। फुल टॉस, टॉप एज लगा, विकेट कीपर के पीछे फील्डर, एक आसान सा कैच और तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ टीम का डीजे। बैट्समैन नेम प्लीज, बैट्समैन नेम प्लीज, न्यू बैटर प्रशांत, थैंक यू। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, प्रशांत।
अच्छा शॉट मिड ऑन पर फील्डर 900 गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 26। लॉस ऑफ 2 विकेट 3 विकेट। अल्टी पल्टी फुलटॉस गेंद पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद, लंबी दौड़ लगाई, बहुत अच्छी फील्डिंग और जब तक गेंद को उठाते पर जगह बनाई बिल्कुल शॉट के लिए विनायक ने और एक सिंगल, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन मिल गया स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ा 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 29 रन 3 विकेट पर। फुल टॉस लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं मिला, थोड़ा सा बाहरी किनारा, गली पर फील्डर और जब तक गेंद को थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन 3 विकेट पर। लास्ट ओवर 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 13 रन। 6 गेंदों में 13 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कैप्टन आइए प्लीज, एफसी क्रिकेटर वास्को क्रिकेट टीम आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। बॉलिंग मार्ग पर प्रसाद, लास्ट ओवर 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। जो जीतेगा इसके बाद क्वार्टर फाइनल का मैच खेलेगा एफसी क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम के साथ जो मैच होगा। ओ बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हुए उस गेंद पर। तो पहली गेंद पर प्रसाद सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए डीजे। आखिरी 5 गेंदों पर और 5 गेंदों में अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 13 रन। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ अब 4 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदों में 12 रन। 4 गेंदों में 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे और प्रसाद दाईनाथ से ओवर द विकेट। इस बार पुलर लेन की गेंद सफल होकर ऑन साइड पर, मिड विकेट पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद पैरों पे टकराई, अपने फॉलो थ्रो में जाते गेंद को उठाते फील्ड करते, धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर
अभी भी मुकाबला बाकी है क्योंकि 3 गेंदों का खेल है। शायद एक दूसरा बड़ा शॉट मैच में फिर से वापसी हो सकती है मैदान पर श्री साखळेश्वर क्रिकेट टीम की। इस बार फिर से वही कोशिश थी ऑन साइड पर, लेकिन लगातार 2 डॉट गेंदे। अब मात्र खेल आ चुका है आखिरी ओवर के 2 गेंदों पर, और 2 गेंदों में चाहिए मैच को जीतने के लिए 12 रन। तो 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। दो गेंदों में 12 रन। टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। सिंगल बनेगा सिलिमिडॉन पर। नौशो कशाकर गेंद को फील्ड करते। अब लास्ट बॉल टू गो। कैप्टन आइए प्लीज, एफसी क्रिकेटर वास्को क्रिकेट टीम। कैप्टन एफसी क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम, कैप्टन आइए तुरंत कमेंट्री बॉक्स के पास। तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ, और इससे पहले जो मैच समाप्त हुआ था
First All Goa Municipality and Panchayat level heavy ball cricket tournament organized by Friend Circle here in Bicholim. A big thank you to all the sponsors, especially Shri Naresh Savar, ex-MLA Bicholim, Vernical Jewelers, Bar Krishna, Shetye Sales and Services, Siddhanath Shetye, Pari Classic, Anant Naik, Tople Caterers, Nilesh Tople, Parsekar Caterers, Suresh Parsekar, Vishwas Gavas, Social Worker, Sangam Par, Social Worker, Gowda Builders and Developers, Ratish Gowda, Siddhi Traders, Mangesh Ferrari, RK Traders, Kota Suppliers, Raseek Saab. And here we go with the first delivery. And straight away into his own follow through, Vishal Kevat. Meanwhile, coming back to the sponsors list, Manorama Wines, Nitin Kumbar Zuekar, Sai Calling. Services, Sai Kamath, Mahalakshmi Opticals, Krishna Ganesh Par. Swing, and that's gone through. Maybe might have some deflection onto it. Dot delivery nevertheless. Pednekar Motor Driving School, Raghvendra Pednekar, Gaukar Construction, Jitendra Gaukar, Munna Transport, Sachin Madhu Malvankar, Sagar Engineering Works, Manoj Mahekar, Raikar Caterers, Muktesh Raikar, and Sai Sagar Bar and Restaurant, Sachin Kairkar. A big thank you to all the sponsors from the Friend Circle Committee. Full toss. And that has been blasted away for one bounce over the ropes by Lakshman. First two deliveries were perfect. This again, this time reverse, a switch, and that will just plug in. Will it go the distance? Yes, it goes for a boundary. First one over mid wicket. Next one. In the field will just be one. The score moves on to 9. Strong contenders, both these teams. Down the ground, up in the air. Fielder didn't come quickly as he would have liked. Chance of a run out at the bowler's end. And that will be gone. But slow to react was Nana, coming back to the danger end. And he's gone. That will be just a single. Newman, the skipper, Noshuk Shalkar in the middle. After completion of the first over, it's 10 for the loss of 1. 10 for the loss of 1 after the first over. Change in bowling, it will be Farooq.
in the bowling attack. So here's Farooq to Nauso. Pulled away. Tall man Nauso. Oh, that's gone through. Raymond Mutage. You don't often see that from him. Usually very quick and usually very agile. 2 runs added. Gets off the mark with a couple. Does Nauso Kashalkar. Score moves on to 12. Swing. Chance of run out at the bowler's end. And that was quick. Bye is given. Leg bye is the signal from the umpire. Reverse sweep. No proper timing, but will find the boundary. Gaurav Sawadesai gets off the mark with the boundary. Score moves on to 17 with that 4. That's whacked. And whacked long for 6. Quick hand-eye coordination. And all the way for half a dozen. This time lets it go and that will be wide. A unique bit of style by Daya Pednekar. Has been excellent with his umpiring today. Oh, how about that for a stroke? Down on one knee and it's out of here again. 6 more. In the slot and into the next plot. Half a dozen yet again. 30 on the scorecard. Still 3 more overs remaining after this delivery. Oh, leading edge and gone. Just trying to work it on the onside. Quickly, that leading edge into the hands of the fielder at covers and gone. Might have just a bit in. After completion of 2 overs, it's 30. 30 for the loss of 2. Change in bowling. It will be Yasin Shingangutti in the bowling attack.
New man in Krishna. So Prasad, the new man in at the non-striking end. Prasad along with the skipper Nausa Kashalkar have the responsibility to take this innings forward. 30 for the loss of 2 after 2. Here's Yasin. Pulled away. And that will be a boundary. Long handle and using it to good effect, the skipper. Score moves on to 34. Well, if this kind of carnage continues, definitely Buddy and Co. will be chasing around 70-80 in 5 overs. And that will be too much to ask for. But we have seen it time and time again when that man, big man, Buddy, gets going. No matter you have the fast man or the slow man in your team, he just brings havoc on the bowlers. This time, toe end the bat will just be a single. No, so Kashalkar getting that single. Score moves on to 35. Full toss. And gone. Straight to the fielder. Prasad this time. Full toss delivery. Played it into the hands of the fielder at covers. Again, another sock dismissal. Wouldn't have picked the man better. New man in Naresh at the striking end. 35 for the loss of 3. Friend circle, Pernim making a comeback in this game. Team from Vasco. Nice little flick on the onside. Is he going to come back for the second? Yes, he will. And will make it quite comfortably. No matter throwing it to Nausa's end. As 5 to 7 strides, he is to the other end. Tall man. Big strides in. Just need to throw it to the keeper's end when Naresh is trying to go. 37 on the scorecard now. Started off with a boundary, then a single wicket, and now a couple. Good delivery. And that will just be a single. In fact, a dot delivery. Was looking to get a single. This time a dot ball. Up in the air again. Miscued. Will be a single. Naresh with that single. Score moves on to 38. After completion of 3, it's 38. 38 for 3 after completion of 3 overs. Friend circle, Pernim.
Full toss and gets the treatment all the way for half a dozen. Huge hit. This time, just trying to play it on the offside. Missed it completely. Dot delivery, nevertheless. Excellent delivery. Right in the block hole. Leg by is a signal given by the umpire. After that, Maximum Sushil has just bowled two perfect deliveries. The one outside the off stump and this one darting into the right hander, a Yorker. He's managed to get a single on that one through leg bys. Brings the dangerous Nauso Kashalkar on strike. Can he go big? Full toss. Oh, no proper timing. Is he going to come back for the second? Yes, he will. Quite comfortably. 2 more runs added. Score moves on to 47. Opting to bat first after winning the toss. Friend circle Pernim. And putting the FC cricketers Vasco into bowl. Again winding up. And this time will just be another single. Score moves on to 48. This being the penultimate over. One more to follow after this. A delivery coming. Last delivery of this penultimate over. Naresh on strike. Full toss and gone the distance. Again a maximum. Score moves on to 54 with that 6. 54 for the loss of 3 wickets after. Change in bowling, it will be Javed. Swing, and that will be a wide. Extras. Score moves on to 55. This being the last over in progress. Second quarter final match between Friend Circle Pernim and FC Cricketers Vasco. That's big. It's up in the air. And that will clear everyone. Just besides the oh, excellent delivery. That was a Yorker, but still squeezed out. And is he going to come back for the second? No, just settling for one. Excellent running, excellent work from that fielder, also coming in from the boundary rope. Quickly realizing that he needs to quickly throw it into the hands of the wicketkeeper. Score moves to 62. That's up in the air. And it's again gone the distance. Excellent work
Excellent timing on that one. Naresh with his third maximum. Score moves to 68. So plenty to score now as far as Buddy and his men are concerned in this quarterfinal too. Still not over yet. 3 more deliveries remaining in this innings. Shuffling across this time, up in the air. Fielder coming in and will take it quite comfortably. 4th wicket down after a breezy little cameo of 21. Naresh has to depart. It's 68 for 4. That he has put for his team to put them in the driver's seat right now. 21 very quickly as well by Naresh. Take a bow. Excellent innings coming to an end. Meanwhile, new man in. Gaurish Nagwekar, aka Ghungru Dada in the middle. 2 more deliveries remaining. Let's see if Ghungru Dada can power some out of the park. He tried for it. Down the ground. Fielder. Oh, take an excellent catch. He slipped earlier, but still. Sushil taking that magnificent catch. New man in. New man in Yash. Score still stuck on that 68. This being the last over in progress. 14 runs of this over so far. And will be on a hat trick. Javed. This time flat and gone. Second wicket, second hat trick of this tournament.
गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। पावर प्ले का पहला ओवर सामने स्ट्राइक पर बैटर है सैयद बद्दी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है आसिफ जमादार। पहली गेंद यॉर्कर, ये बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र है इस गेंदबाज का। गौरेश नागवेकर हो, महेश बाइडकर और मैडी हो, ये यॉर्कर उनकी बिल्कुल जो कि खासियत है। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। बिल्कुल आजकल संकेत जोरे भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। आजकल काफी गेंदबाज है, सोमेश डोड्डामणि का भी हम जरूर नाम लेंगे। गौरेश अगली गेंद लेकर कानकोन से बिल्कुल रजत कोमरपंत, तो वो भी काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो आजकल काफी प्रभावित किया इन खिलाड़ियों ने। जिस तरह से हम बल्लेबाजी में नाम हमेशा लेते हैं, पुनाजी कलंगुटकर हो, रजत कुडालकर हो, साहिल वाइंगणकर हो, साहिल आरोलकर हो। फिर से पुलर लेन की गेंद अपने फॉलो थ्रू में। एक जोरदार अपील जरूर रहा था, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर गेंद पैरों पे टकराई थी, खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद चली गई थी, ऑफ साइड पर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को जरूर पकड़ा था। हल्का सा अपील भी जरूर रहा था, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा। गेंद सीधी जाके पैरों पे लगी थी, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मालूम है ये विकेट बहुत कीमती है और इसलिए पूरी अपनी ताकत जो कि दाव पर लगा चुके गौरेश नागवेकर, लेकिन सामने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं सैयद बद्दी। उनमें बल्लेबाजी में क्षमता, ये मैच बिल्कुल जो कि समाप्त करने का, और देखना होगा उनका रुकना, उनका खेलना इस मैदान पर आने वाली गेंद पर क्या होता है। कट के इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट की तरफ पहले रन के लिए निकले। दूसरे रन का मौका बन चुका है मैदान पर। जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ एफसी क्रिकेटर्स का। 69 रनों के जवाब में पहला ओवर चलता हुआ और अब तक स्कोर रुका हुआ 2 पर। आज 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक मुकम्मल की, जानू और यश, ये 2 गेंदबाज रहे हैट्रिक मुकम्मल करने वाले। पावर प्ले में अगर बात की जाए तो साहिल वाइंगणकर ने बहुत अच्छा जो कि स्पेल किया पहले ओवर का। बहुत ही लाजवाब शॉट, गेंद हवा में कवर पर, लेकिन फील्डर से दूर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा टोटल 4 पर। पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान से। दूसरे ओवर की शुरुआत, पावर प्ले समाप्त हुआ। अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं कुणाल। सामने आसिफ जमादार स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रन मिले स्कोर के खाते में।
इस बार ऑन साइड पर थोड़ा सा टॉप एज लगा और जब तक गेंद को फील्ड करते शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर। पहले ओवर में पावर प्ले में जरूर रन नहीं बने, 4 रन बने थे, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत पर एक बड़ा शॉट आसिफ जमादार के बल्ले से और अब स्ट्राइक पर आ चुके सैयद बद्दी सामना करते हुए कुणाल की गेंदबाजी का। दूर दूर जमाई गई फील्ड। आज दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मैच इन दो टीमों के बीच में। छोटी गेंद, इस बार गैप में गेंद और देखना होगा दो फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए सैयद बद्दी ने। बहुत अच्छा शॉट, गैप ढूंढा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में लंबा फासला था वहीं पर, लेकिन गौरेश नागवेकर ने भी लंबी दौड़ लगाई और अच्छी फील्डिंग, मिले 2 रन स्कोर के खाते में। कुणाल एक बार फिर से एक छोटा रनअप 8-10 कदमों का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। इस बार ओवर पिच गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में। 6 रन के लिए डीजे। ये ओवर, ये दूसरा छक्का लगता हुआ इस ओवर में। जो पहला ओवर थोड़ा सा कम टोटल था, सिर्फ 4 रन, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े शॉट लग चुके हैं और दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से। एक पहला लगाया आसिफ जमादार ने और अभी अभी लगाया सैयद बद्दी ने। हल्के से आगे निकल करके इनको ड्राइव किया। इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिल गया। खेल अभी भी जारी है। दूसरे ओवर का 5 ओवर का मैच है। 69 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 69 का 5 ओवर में स्कोर हो चुका है 20 विदाउट लॉस। 20 रन टोटल, 1 टू गो। ओह, लाजवाब टाइमिंग, मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद चली गई। 6 टोटल 26। 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 26 रन बिना किसी नुकसान से। एक बहुत अच्छी शुरुआत एफसी क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम की। सामने फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के साथ विकेट की तलाश है फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम को, लेकिन उससे पहले देखना होगा सामने एक अच्छी साझेदारी बनती हुई, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन शुरू होने जा रहा है। लक्ष्मण आ चुके बॉलिंग बार पर, अपने फील्डिंग को थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर 3 फील्डर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। ऑफ साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर। दूर से खेला इस बार ऑफ साइड पर गेंद को और फील्डर है, जब तक इनको उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 27 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर 27 टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। स्ट्राइक पर बैटर है आसिफ जमादार। ओह, लाजवाब शॉट, लेकिन सीधे हाथों में। जो फील्डिंग में बदलाव किया था, फील्डर को लगाया। तो शुरुआत होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से बड़े टोटल के सामने, वो दिला दी आसिफ जमादार और सैयद बद्दी ने। आउट होकर वापस आसिफ जमादार, उनके आउट होने के बाद यासिन सिंगनगुट्टी मैदान पर और देखना होगा
अब आने वाली गेंद पर मैदान पर क्या होता है, फिर से थोड़ा परिवर्तन फील्डिंग में दिखाई देता हुआ। 69 का टारगेट है। स्कोर हो चुका है 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। फुल टॉस, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और सीधे हाथों में गेंद निकली गौरेश नागवेकर। दूसरा विकेट चला गया एफसी क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम का। डीजे पर रेवन फुल टॉस गेंद थी, लेकिन जो गैप था उसमें नहीं खेल पाए। सामने अगर लॉन्ग ऑन पर और लॉन्ग ऑफ के बीच में बड़ा फासला था, लेकिन अच्छा कैच। दूसरा विकेट ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग बार पर लक्ष्मण उर्फ नाना। आज 2 हैट्रिक हो चुके हैं और सामने न्यू बैटर रेवन उर्फ लपलप। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, कुणाल का 3 छक्के लगे थे, लेकिन ये ओवर में फिर से वापसी करती हुई फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम। थोड़ा सा दूर से खेला इस बार, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए लक्ष्मण, लेकिन ज्यादा नाना के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को, और वो अपने बॉलिंग बार पर। अल्टी पल्टी फुल टॉस, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे का खेल बाकी है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 38 रन। 12 डिलीवरीज 38 रन। 12 गेंदों में 38 रन मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत। सामने सैयद बद्दी, वो जब तक है मैदान पर मैच निश्चित रूप से बाकी है, क्योंकि इस बल्लेबाजी में दमखम है पूरा, जो कि अपने बल्ले से बल्लेबाजी से इस मैच को समाप्त करने की। प्रसाद बॉलर, ओ ये गेंद आकर शरीर पे टकराई। बहुत अच्छी फील्डिंग, एक जोरदार अपील विकेट कीपर गौरेश सावल देसाई और साथी फील्डरों का, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाह है दोनों अंपायरों की, सुदन और दया पेडनेकर। 11 गेंदों का खेल बाकी है अभी भी मैच का, और प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है रेवन उर्फ लपलप, और स्ट्राइक पर है सैयद बद्दी। छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में।
अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक विकेट कीपर आते गौरेश सावल देसाई गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर। 31 रन अभी भी चाहिए। रेवन स्ट्राइक पर। छोड़ा, इस बार जाने दिया। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर में। एक अतिरिक्त गेंद बढ़ चुकी है। आखिरी गेंद पर देखा जाएगा इस ओवर की जो कि आखिरी गेंद होगी, क्या फायदा होता है किस टीम को, ये भी देखा जाएगा वाइड बॉल के साथ। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर, ओहो क्या छूटा। एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और बने स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ा 41 रनों पर। प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले। इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर सीधे हाथों में। और तीसरा विकेट चला गया टीम का, एफसी क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम का। डीजे पिछले ओवर में मैच में वापसी की, उससे पहले जो कि दूसरा ओवर अच्छा रहा था, 22 रन बने थे दूसरे ओवर में, 3 छक्के लगे थे। लेकिन फिर से कमबैक अच्छा किया पिछले ओवर में लक्ष्मण ने। और उसके बाद प्रसाद एक छक्का लगा, लेकिन एक कीमती विकेट भी मिला। और स्ट्राइक पर बैटर आसिफ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सैयद बद्दी। छोटी गेंद और मिड विकेट पर फील्डर, अच्छे फील्डिंग और सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। दूसरे के पलट रही है पलटे और रनआउट के रूप में और एक विकेट चला गया टीम का। शायद उतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन अपना विकेट खो बैठे। 1 रन जरूर जुड़ गया स्कोर के खाते में। तो इस सिंगल के साथ अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 27 रन। लास्ट ओवर 27 रन। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात थी शाम, क्योंकि स्ट्राइक के लिए ये हलचल थी सैयद बद्दी की। वो इस तरह का खिलाड़ी है जो ये 6 गेंदे 27 रन। कमेंट्री बॉक्स में मैं अभी भी बात नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये विकेट बहुत मायने रखेंगे मैदान पर। देखना होगा अंतिम ओवर, थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा गेंदबाजी पर भी और बल्लेबाजी पर भी। और वो ओवर लेकर चर्चा हुई, टीम मीटिंग हुई छोटी सी, और आखिरकार चर्चा के बाद गेंद सुपुर्द कर चुके हैं आशीष के हाथों में। लास्ट ओवर और मैच को जीतने के लिए चाहिए 27 यानी 27 रन। फारूक न्यू बैटर सैयद बद्दी का साथ देने के लिए। सत्ताईस रन आखिरी ओवर, लास्ट ओवर। शुरू की 2 गेंदे, बिल्कुल श्याम आपकी बात सही है, 2 गेंदे शुरू की बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन साइड पर खेला, इस बार क्या दूसरे रन की कोशिश रहेगी। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में
और बहुत अच्छा थ्रो, बहुत अच्छा थ्रो। एक विकेट जरूर चला जाएगा, लेकिन फिर से सैयद बद्दी आ चुके हैं स्ट्राइक पर अंतिम ओवर में, और एक विकेट चला गया। खेल बाकी है 5 गेंदों का और मैच को जीतने के लिए चाहिए 26 रन। बहुत अच्छा थ्रो सोहेल का, बाउंड्री लाइन से सीधा विकेट कीपर के हाथों में, एक शानदार थ्रो। और एक नए बल्लेबाज सुशील आ चुके हैं मैदान पर। जो कुछ करना है इस मैच में सैयद बद्दी को ही करना पड़ेगा। 5 गेंदों का खेल और 26 रन। छोटी गेंद, इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। और एफसी क्रिकेटर सोचते होंगे कि आने वाली गेंद पर क्यों ना और एक बड़ा शॉट बन जाए सैयद बद्दी के बल्ले से। और क्या मौका बनेगा? जी नहीं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ये लगा, सिक्सर 6 रन के लिए। करे 3 गेंदों में 14 रन, 3 बॉल्स, 3 गेंदों में 14 रन। एक मैच मुझे जरूर याद आ गया, लेकिन वो ये वक्त नहीं है उस मैच की याद करने का। समाप्त होने के बाद जरूर याद आएगा वो मैच। 3 गेंदे और 14 रन, एक डॉट गेंद, मैच बन जाएगा फ्रेंड सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के लिए। और आने वाली गेंद पर अगर शॉट लगा तो ये मैच आने वाले आखिरी 2 गेंदों पर बिल्कुल मुकाबला देखा जाएगा। ऑफसाइड पर कट किया इस बार, और गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बॉल बॉयज है, लाइनमैन है, दोस्तों आप थोड़ा सा जागते रहो। जो हमारे बॉल बॉयज है दोस्तों, आप थोड़ा जागते रहो, क्योंकि ये मैच अब आ चुका है आखिरी 2 गेंदे और 10 रन। 2 गेंदों में 10 रन, ये मैच का बॉल है, ये गेंद मैच की गेंद है। ओ चलो, थोड़ी सी राहत की सांस। मिड विकेट पर फील्डर, ओहो थोड़ी सी मिस फील्डिंग, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अब मैच आ चुका है आखिरी बॉल पर। लास्ट बॉल, 8 रन। अब दबाव है वाइड बॉल और नो बॉल का। क्रिकेट में यह बिल्कुल बहुत बार देखने को मिलता है। देखना होगा फिलहाल क्या होता है। अगर डॉट निकालने में सफल रहे तो गेंदबाज के भी तारीफ होगी, लेकिन सामने मैच का नतीजा कुछ भी हो, सैयद बद्दी की बल्लेबाजी को भी दाद देनी पड़ेगी। लास्ट बॉल और 8 रन। चलिए चलिए, मैच को समाप्त कर दिया, लेकिन सैयद बद्दी के लिए भी शानदार बल्लेबाजी के लिए तालियां होगी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की सैयद बद्दी ने।
पर जो दर्शक उनका बिल्कुल मनपसंद मुकाबला दोस्तों अगले शनिवार और इतवार को फिर से खेल जारी रहेगा इस मैदान पर। आप सभी के लिए जानकारी और इस मैच के समाप्ति के बाद हमारे स्कोरर अर्णव के साथ चर्चा होगी मैन ऑफ द मैच इस मैच का। अब आपको आना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा आना पड़ेगा। आइए प्लीज, अपने टीम के साथ सपोर्ट के लिए हमेशा आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। तो दूसरी टीम कल के पहले दिन में सिद्धेश्वर मल्लिकार्जुन क्रिकेट टीम, आज दूसरी टीम बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। सैयद बद्दी की बल्लेबाजी को तो दाद दी और मुझे वो भी मैच है लेकिन वो चर्चा जरूर, लेकिन एक शानदार बल्लेबाजी रही। 40 रन बनाए सैयद बद्दी ने, क्या शानदार बल्लेबाजी रही। कहां पर मैच छूटा, मेरे ख्याल से जो पावर प्ले का ओवर रहा उसमें सिर्फ 4 रन बने, वो ओवर कहीं एक शॉट से दूर हो गया। लेकिन सामने बल्लेबाजी गौरेश सावल देसाई ने बनाए 16, लक्ष्मण ने बनाए 10 रन, 17 रन बनाए 900 कशालकर ने और नरेश की शानदार बल्लेबाजी 3 छक्के 21 रन बनाए। स्कोरर के साथ चर्चा होगी इस मैच का मैन ऑफ द मैच। बाजी में 1 ओवर 5 रन 2 विकेट, वो लक्ष्मण सावल देसाई उर्फ नाना मैन ऑफ द मैच। आइए नाना, आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए। रामदास पड़ और कृष्णा पड़, आपसे रिक्वेस्ट है आप दोनों के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी और मैन ऑफ द मैच लक्ष्मण सावल देसाई उर्फ नाना। खेल समाप्त हुआ। फिर से कल आने वाले शनिवार को फिर से 9:30 को मिलेंगे इस मैदान पर।